Okay, setup is done. We are live right now. Okay, good. So, hello, ladies and gentlemen. Welcome to the live stream of zibit.com. My name is Yash, and I am a live stream host over here. Basically, I take care everything which is your problem related to the crypto world. Also, I provide education as well. Also, I provide support as well. Also, I teach as well. Also, I give live trades as well. So this is a complete a package for all of those people watching me from YouTube, watching me from the X platform, and also watching me from our, that is a CPTA. Okay. Now, for those people who are watching me for the first time, they don't know about this, like what is going on over here, what is this live stream, what we do on the live stream.
What is the Cbit? What is why there is a guide? Why there is a chart on his side? So for all those people who are wondering what this live stream is about, this is not just me coming on live and doing a trade. Okay, to be very very fair, to be very very frank, this is, I'm not a like independent trader who comes on the live. Welcome user 498930, welcome on the live stream. Thank you so much for joining this live stream. Thank you so much for being a part. My name is Yash. May I also know your name as well, like drop in hi, I know every of those things. He left. Okay, so cool, let me continue. So as I was talking about the YouTube thing, the people who are watching from YouTube, the people who are watching from X. Again, welcome user 498930. Welcome on the live stream, and user 796731. See, I really feel bad. Like I call you by the username. So it's better like you drop in some hi, like what is your name, so that we can have a normal conversation. And also, if you have any doubt related to anything, please feel free to comment on this comment section. But first, do share me your name, because that's what is needed, because that's what I will be calling you from. And calling you for the username, it's like not, we are not having that person connection. My name is Yash. I really want to know all of my people from the Zebit platform as well. Like who they are, what problem they are facing. Are your trades are going good? Your trades are not going good. Are you facing loss? Are you facing profit? Anything, please feel free to share me on this live chat, because I really don't want this live stream to be like just me speaking to me, because what I can see is like me sitting over here, then me on that camera, and then me on that other screen. I don't want that. I want this live stream to be a fun loving live stream where you and me are having a constant chat regarding everything. What's going on with your trades? Are you facing loss? Are you facing good profit? If you're facing loss, then tell me, I can help you. Seriously, I can help you. Okay, I can help you with the risk management. I can help you with so on, so on, and so on things. So please make sure that you are commenting on the comment section, and you are telling me about your problems, your issues, or anything. If you want to even share like what happened yesterday or something like that. Okay, so please, user, like the first user, I want to like see first step you have to make. Obviously, if you started, the rest of people also started. It's like a chain reaction for the humankind. Okay, one people does it, and then it followed and followed and followed and followed by the rest of the people. So be the first person on this live stream to drop the first comment. User 498930, be the first person to drop a comment on the live stream, and let that chain reaction begin, so that everybody, whenever they come on this live stream, they introduce themselves as well. So I request, please, user 498930, please do feel free to drop hi or your name. Like I told you that like my name is Yash. I really want to know my audience. I really want to know the people on the live, like the Zbit lab, because they are our like true audience. YouTube and XR, we are finding the new audience for the app, and the people who go come on the live stream in the app, they are our true audience. So I would really like to know about our true audience. So please, user 498930, please tell me your name and what's going on. How is your life? Are you doing good? Are you not doing good? Anything? Please do share. Be the first person to chat. Be the first person to start the blockchain. You can be actually that person from which like everybody started doing things. You can be that first person to bring the change on the live stream. So come on. User 498930. My name is Yash. Can I know your name as well? And dropping on hi is not a big thing. It's like you just have to type H and then you have to type I. That's all. See, it was so easy. It was so quick. H and I, and whatever your name is, please feel free to share. And also for all the new user coming on this live stream, I want to tell you this one thing, that this live stream has two functions. One is deposit and another one is to take a trade. Obviously, when I give you the like live trades, we will go for it. Then at that moment you can tap on the take a trade, and you can take the exact trade, the same trade which I am taking, and you can gain the same profit which I am. Welcome user 344677. Welcome on the live stream of the Zip platform. Thank you so much for joining. Thank you so much for being a part of this live stream.
Okay, I really want to chat with a lot of you people so that I can have understand your issues. Because if you don't talk to me, if you don't tell me your issues, your problems, I how I can help you? To be very frank, it's the same like with happens with the boyfriend girlfriend as well. The boyfriend has the tendency like we are open people. We boys we share like okay this is wrong, this is wrong, this is wrong, and the girls will have a little different techniques like they will say I am mad, but they won't say why she's mad. So let's not be that person. Let's not be the things like you are mad or you are having issues, but you don't want to share. Please do share. Sharing can only help you achieve a good amount of profit. Sharing can only help you achieve a good amount of success. So please do share, do chat on this live stream because this is not a video like you are watching on the YouTube. This is a live interaction a live interaction platform, a live interaction live stream where I can see your comments. I can talk with you. I can chat with you. I can be with you. I can understand you. I can understand your problems, and I can give you accordingly a solution. So please welcome user 457003. Welcome on the live stream. Welcome on the live stream of a Zero platform. Thank you so much for joining. Thank you so much for being a part of this live stream. And trust me, all the people who are joining in, if you are a new user, do make sure that whenever you come on this live stream, there are two functions. One is deposit, another one is a take a trade. Do click on the deposit if you haven't done your deposit yet. Click on the deposit option. You don't have to go to the home page. Okay, it's like the function is made for you to make your life easy rather than exiting the live stream and then going to the home page and then doing all those deposits and blah 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 blah. You don't understand anything. Ouch, ouch. Why I don't understand anything? Like try, please try. At least one time you try. Maybe I will understand. Maybe I'll understand your wishes. Maybe I'll understand you. Maybe I'll understand you better than anyone. Maybe. Can you share which coin is a good profit? Yes. Why cannot? I can share. I can share you exactly an investment plan which you can make a lots of like more than $50,000 out of one coin, out of two coin, out of three coin. I can share you those coins as well. But please, user 457003, can you share the first thing like when you said like you don't understand anything? How how want to how want to know more about trade? I You want to know more about trade, like what user 366344, what do you want to know more about trade? Like learning trading, like how to find the trades, how to invest, all those kind of stuff? Are you looking for those things? Because I can help you with that as well. So let's clear on first user 45700, can I have your name at least? Let's start with a conversation. Let's start with a normal hi, hello. What's your name and why you think that I won't understand? Think anything you said. You won't understand anything. I've understood the most crucial brain of this planet. That's ladies' brain. So if I can understand ladies' brain, I can understand yours. Definitely, I can understand yours. Ladies' brain is hard to analyze. Yours is not. So please do feel free about telling me what is it. But start with your name first. Let's start with the name. My name is Yash. Hi. What's your name? User 457003. You don't understand anything. I really feel like you didn't had a good start in the morning. Maybe a fight with a spouse, maybe fight with a fiance, maybe fight with a girlfriend, maybe fight with two girlfriends, maybe three girlfriends, maybe four girlfriends. Who knows what kind of reason you are having? So, hi, user 457. I can see you are in the live stream. Please feel free to say your name first. Like then we can start this conversation, and I can give you the best investment plan, which can actually make you earn more than 20 to 30 to $50,000. It might take some time, but this is not about future trading. Okay, this is about a spot trading. The investment plan is regarding a spot trading. So I can share you that thing, but let's start with the name, and let's start with you don't understand anything.
Did you just blabbed it out of nowhere like, okay, I will just type it, I'll be cool on this live stream? Did you just blab it like that, or you really have some issues, or you are really facing? क्या B20 USDT बोनस से खेल के विड्रॉ कर सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई मी। यस, वेलकम यूजर 574738। माय नेम इज यश। आप जो वो 20 USDT जो बोनस मिला है आपको, वो होता है पहला फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है। फ्यूचर का जो पहला ट्रेड होता है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए ही हमने वो इन्वेस्टमेंट दिया है 20 USDT का। अब ये बोनस अमाउंट, ये असली पैसा पैसा नहीं है, मतलब एक एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग के बीच का पैसा है, ठीक है। अब ये पैसे से आप ट्रेड ले सकते हो, खेल सकते हो, आप ट्रेडिंग करो। जो भी XYZ, मतलब उस पर अगर समझ, फॉर एग्जांपल $1 प्रॉफिट, 2, 3, 4, 5, 10, 15, जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो आप विड्रॉ कर सकते हो। बट वो जो 20 USDT है बोनस अमाउंट, वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जो भी प्रॉफिट आप, जैसे आपने ट्रेड ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया BTC पे ट्रेड, BTC के फ्यूचर पे जाके आपको अपने मार्केट एनालिसिस किया, आपने उसके हिसाब से एक ट्रेड ले लिया। जैसे ही आपने वो ट्रेड ले लिया, वो ट्रेड चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आपको फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो 10 USDT का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपके अकाउंट में कितना था? 20 आपने लगा दिया, उस पर निकला आपको 10 मिला। अब ये जो 20 है, ये आपको अपने अकाउंट में वापस नहीं दिखेगा। जैसे ही वो ट्रेड क्लोज हो गया, ये 20 वैनिश हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट में वो सिर्फ 10 ही दिखेगा, जो आपका रहेगा क्या? प्रॉफिट। एंड वो प्रॉफिट आप उससे अगर फिर से ट्रेड लेना चाहते फिर से ट्रेड लो, विड्रॉ करना चाहते हो विड्रॉ कर लो, या फिर आपकी जो मर्जी है, मतलब वो प्रॉफिट आपका है कंप्लीटली। एंड अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कि आपका 20 USDT लगा दिया आपने, जो हमने आपको इन्वेस्टमेंट दिया 20 USDT का बोनस, वो आपने लगा दिया, आपको लॉस हुआ लॉस हुआ लॉस हुआ, और पूरा का पूरा 20 USDT खत्म हो गया। ये 20 USDT का भरपाई आपको नहीं करनी है, ये हमारा पैसा है, लॉस हम झेलेंगे, प्रॉफिट आप इस्तेमाल करोगे। सिंपल, ये इतना सिंपल है, ठीक है। यूजर 574738। हाँ, और एक और चीज, जैसे ये होता है सिर्फ पहले ट्रेड के लिए, ठीक है। ये दूसरे तीसरे चौथे, मतलब बहुत लोग की मेंटालिटी कैसी होती है कि यार मेरे पास 20 USDT है, मैं एक काम करता हूं, पहले 10 लगा देता हूं, बाकी का जो 10 है मैं वो दूसरे ट्रेड में लगाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही फर्स्ट ट्रेड के लिए ही अप्लीकेबल होता है। आप चाहे तो पूरा का पूरा 20 लगा दो, या उसमें से 5 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, उसके बाद वो सेकेंड ट्रेड के लिए बचा हुआ अमाउंट अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट ट्रेड के लिए रहता है। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है कि कहाँ मेरा बाकी का पैसा, मैंने सिर्फ 10 USD लगाया, बाकी का 10 कहाँ है, वो चले गए, तो बहुत एक एडवाइस है कि जब भी आपको एक बोनस अमाउंट मिलता है, तो ये पहले ट्रेड के लिए होता है, सभी लगा दो एक साथ में, क्योंकि वो दूसरे ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। एक बार जो गया वो गया, मतलब लाइक वो ऐसा आप डिवाइड नहीं कर सकते कि मैं अभी 10 लगा देता हूँ, नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं वापस दूसरा 10 लगा दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, वेलकम यूजर 103549, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। May I also, like, whenever, see, like, let's do this one thing, like, jab bhi, yeah, harder. Thank you brother, thank you. So jab bhi सारे इंडिया के है क्या? लाइक मेरे को लैंग्वेज में थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, नाइजीरिया के भी लोग आते हैं, इंडोनेशिया के भी लोग आते हैं, और कहीं कहीं अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि विच लैंग्वेज शुड आई ऑप्ट टू। कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश यूज करता हूँ, क्योंकि बाकी के भी लोग हैं, उनको थोड़ा लेफ्ट आउट फील ना हो, फोमो ना होने। सो you welcome user 911317. My name is Yash Pawar and welcome on the live stream of Zibit.com. Thank you so much for opting this. Thank you so much for opting and coming to this live stream. And trust me, you are on the right platform. You can actually earn a lot of good amount profit when I am on this live stream. I can teach you regarding so and so and so much of stuff. Okay, Abhi, I am a new here. Please, how can I trade for first time? Okay, so you are a new user. Can I know your name, brother? My name is Yash. I am a live stream host. May I also know your name, please? Like, so I can chat with you and I can tell you how exactly you can utilize. There are 2 to 3 rewards which you can use for a first user. Okay, so first of all, as you are a new user, first
free trade of future is completely free. Okay, we have offered all the new users, like whoever comes as a new user, for you first future free trade is given, and that too, I am Samuel. Okay, nice, nice. Thank you so much for telling me your name. Thank you so much. So, Samuel, whenever you are a new user, so you have one reward which is first future free trade, future trade. I'm not talking about spot trading. Zbit offers you two trades. One is future trades and one is a spot trade. Okay, so in that future trade, you have first free trade, which will be investment we will be providing you, that is 20 USDT bonus. Before it was 10, now we have opted to 20. We have given you little more. Okay, so you can take a 20 USD worth of free trade completely, and that to any coin. If you feel like you want to do Bitcoin, do Bitcoin. You feel like you want to do some other coin, you can do other coin as well. It's completely like there is no condition like you have to do in this exact coin or something like that. No, there are no conditions. Okay, so there are some rules. You won't be saying rules, but there are some, like, yeah, rules and regulation kind of stuff. Okay, first, that first trade is the only one which is free, not the second, not the third, not the fourth, only the first one. So that 20 USDT you have to use completely in the fun go in the first trade, because it won't be like you are using 20, you have 20, you use 10 before, and then you are leaving the 10 for the second trade. No, for the second trade that 10 will not be available. Okay, so it's better to go for all 20 USDT in first trade. You can pick whatsoever leverage you want to pick, and you can pick your own margin. You can do, like, you are completely free to do whatever you want to do with that 20 USDT bonus. But that bonus is non-withdrawable. You cannot withdraw that bonus. Okay, like how much can I use to start a trade? See, for the bonus thing, you have 20 USDT bonus. You can use completely, because that's why I'm saying you, for the second trade, that for I will give you example. Say if this is my first trade and I have 20 USDT as a bonus, okay, that we offered to you. I used 10 USDT for my first trade, and I was thinking that I can use this next 10 for the next trade. But for the next trade, that 10 USDT will be gone. It won't be there. So you have to use the whole 20 USDT in one single trade. Got it? Now, whatever profit you will be gaining from it. For example, let's say you gain $5 profit, $10 profit, 15, 20, 30, or even 100. Whatever amount of profit you are gaining, that is completely your profit, which you can withdraw. And for example, my balance right now, your balance might be, can I withdraw the profit I earn with the 20 free USDT? Yes, you can only, that is only, you can only withdraw your profit. That 20 USDT bonus will not be withdrawn. It cannot be withdrawn. That is a bonus amount. Once you take a trade and that trade is closed, that 20 USDT will be gone from your market. Like the thin air, it is gone. Only remaining in your amount balance will be your profit, whatever profit it is. 1, 2, 3, 10, 20, 30, whatever your profit is, that only will be available in your amount balance. That 20 thing will be gone from the amount balance, because that is a bonus amount. Okay, and that 20 cannot be withdrawn. Your profit can be withdrawn. Okay, now other thing, like I am from Nigeria, how can I use to start trading? I didn't understand your question. Like, how can I use what? How can I use what? What you want to use to start trading? Do you want to use that 20 USDT bonus? Samuel, can you be a little specific? Like what you are asking me, that how much I can use to start trading? Like, are you asking for a general thing? Like with what amount should you come on the platform? What amount you should start doing trading? If you're asking me that thing, then Samuel, see, there is no such fixed amount to start with. But if you want to earn a good amount of profit in the cryptocurrency, and you want to see that profit in your amount, if you want to see that profit in your wallet, and you want to get rich, the key is buy good quantity and you can have a good amount of profit.
If you buy less quantity, you have less profit. So it's basically, if you want to start trading, not start with big amount, don't start with very small amount. At least to least, start with at least, let's say 50 to 100 USD, somewhere in the between that you start your trading. Because I'm not saying you completely very big amount, because in the starting, as you are a new person, as you're a new trader, obviously you will be facing some losses. I am from I am from Nigeria. How much I can use to start trading? Yeah, that's what I'm saying. You like at least start with something around 50 to 100 USDT, because I don't want you to give like a big amount, like 1,000, 2,000, 3,000. That's because 1,000, 2,000, 3,000 are those price which you can earn a good amount of profit from it. Maybe daily 10, maybe daily 20, maybe daily 30, 40, 50 USDT you can earn from what? From 1,000 to 2,000 to 3,000 USDT. Okay, but as you are a new user, as you are a like a new trader as well, and you don't know anything about trading, so my advice is don't go for a big amount in the starting itself. Because in the starting, yes, for very obvious, for very pretty obvious, you will be facing a losses. Okay, and you cannot handle those losses also. So rather than feeling bad that I lost a big amount, it's fine to start with a little small, not exact, like not too small, like 10, 20 USDT. Start with somewhere in 50 to 100, like maybe 60, maybe 70 USDT. And then whenever you face loss, you might not feel that big, like, okay, my money is gone. You might lose small amount of money. That is okay. Losing trade can give you a lot of good experience, more experience than gaining any of the profitable trades. The one trade which gave you 20 USD profit won't give you that experience than the one trade which gave you maybe 10 or maybe 5 USD loss. So loss is going to happen. That is totally fine, because that's what we are opting to. This is not just like a win 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 game. This is win and lose game. And from the lose, we have to gain experience and we have to apply it for the next time. So for the amount, for how much amount you want to start doing trading, I would suggest Samuel to start from somewhere between 50 to 100. And you know this live stream option, there are two options over here. One is deposit and one is take a trade. If you are a new user, you have never done a deposit, I would love to request you that on this live stream platform, click on the deposit and do your deposit rather than going from the home page. Because if you do from the live stream function, you might receive some good, like maybe some rewards, maybe some giveaways, maybe small giveaways, or maybe some small rewards. So if you want to do it from the live stream app, you might receive some giveaways, you may receive some like rewards, small reward, not big, small, but you still, because if you do it from the home page, there is nothing for you, there is no giveaway, there is no, but there is a chance in the live stream app. We pick our best, like it's like we pick the best audience, we pick like from the deposit thing, from the people who come on the live stream, we pick like in a monthly, we pick one person and we give something, like a small gesture from us to being a part for us, to being a part in this company, to being a part in our app. Okay, so make sure that whenever you are depositing, deposit from the live function app itself. Okay, cool. And for the trading, Samuel, if you want to know how to learn trading from exactly scratch, like you don't know anything about trading, but you still want to learn from that exact scratch, I can help you with that thing as well. Do you want to know that thing? Because I can share you. Okay, Samuel is gone. Cool. Okay. User 672990. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. May I also know your name as well, please? Whenever you come on the live stream, have a chat. Have a quick chat. Nothing is gonna hurt you with a quick chat. Nothing is gonna be like chat. Oh my god, next. It's not gonna be that. So, welcome user 102399. Hi, my name is Yash and I'm a live stream host over here. Welcome to the Zbit platform. Welcome to the zbit.com. This is one of the most friendly app for doing a trading. Okay, so please make sure that you are like saying hi, hello on the comment section. Make my day bright. Make your day bright from chatting with me. I'm not a bad chatter. Okay.
User 213152, welcome on the live stream of Zibit platform. Thank you so much for joining. Thank you so much for being a part of this live stream. Okay, so I want to do this one very specific thing. Okay, there are just one people over here right now. I will wait for a few minutes. When there are 4 to 5 to 6 to 7 people on this user, I will be sharing you my one of the best investment plan, which with which you can actually earn the same amount which big player earns. The big player earns a very hefty amount. You have seen like how good they invest, how good their profit is, every of those things. And I have cracked that code for all of you people. But if you want to know, I'm gonna wait for more and more and more people to join in over here, and then only I'll be sharing my investment plan for all of you people so that you can also take advantage of that and earn a good hefty amount of money exactly like those big play runs. Welcome user 812643. Thank you so much for joining this live stream. Thank you so much for being a part of this live stream. May I know your name? My name is Yash. Any issues, any problems, any things are you facing? Welcome user 790258. Welcome on this live stream. Hi, my name is Yash. And also, see, Indian people, any language issue you face, just comment Hindi. I will speak in Hindi. Okay, if you don't understand language, if you don't understand English very properly, it is a little hard for you to understand, that is completely fine. If you at any point you feel like, okay, I don't understand this, I don't understand that, can you speak in Hindi, just comment Hindi in the comment section and I will speak in Hindi. Okay, got it? Cool. So user 812643 and user 790258, welcome. And please do drop your names, do drop your any, are you happy, are you not happy, how was your day, every of those things, like whatever it is. You can just come on this live stream, you can chat, and I can give you a very good investment plan as well. Are you interested in knowing the investment plan? If yes, we should have a poll function. मेरे पास $4 है, 10 कैसे करूं? वाह आपके पास $4 है, आपको 10 करना है, मैं बताता हूँ कैसे 10 करते हैं उसे। ठीक, सबसे पहले तो ऐसे कोई कॉइन में अभी सिर्फ $4 है आपके पास, ठीक है, $4 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट। उसको 10 करने के लिए आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 3 से 4 से 5% का मार्केट कैप्चर करना है। अब ये 3 से 4 से 5% का मार्केट कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एटलीस्ट ऐसे कोई कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए जो है वैल्यूएबल, जैसे हो गया अपना इथेरियम, जैसे हो गया अपना बिटकॉइन, जैसे हो गया अपना सोलाना। एक्सआरपी थोड़ा उसका वैल्यू कम है, अभी सिर्फ $2 ही है, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, उतना प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 से 10 करना है मुझे एकदम लाइक स्विच, उतना नहीं हो पाए। तो इथेरियम, सोलाना या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद वेट करो मूवमेंट का, एक मार्केट का, या फिर छोटे 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 लाइक 1% 1% 1% 1% ऐसे तुम 10-12% की प्रॉफिट मार्केट मार्केट कैप्चर करो, या फिर एक ही ऐसा मार्केट कैप्चर करो जो 2 से 3 से 4-5% का मार्केट। उसके लिए ऑब्वियसली एक लंबा वेट करना पड़ेगा, एक मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो मैं करके दूंगा, जो मैं ही करके दूंगा, आपको भी वो करने की जरूरत नहीं, जो मैं ही करके दूंगा। और आप जब मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, यहाँ पे एक अच्छा बहुत एक मार्केट का मूवमेंट आएगा, वहीं पे ट्रेड ले लेना, ठीक है? ओके, सो there are no user right now on the live stream. So coming back to the YouTube people, sorry. See, my first priority is obviously 20 USDT sign up bonus. Kunal boy. Yes, Kunal boy. There is a 20 USDT sign up bonus we have in the Zibit platform. And I would love to request, see Kunal boy, you are joining from live stream, you are watching me from live stream. So like on from YouTube. So please, and if you are using an Android phone, for all those Android user, you can just simply go and search zbit.com, zbit.com.
It's not Z like in a Z double E. It is Z as in Z only. Okay. So zbit.com. You can just go and download that app and you can actually enjoy. So I will tell you all the rewards. Okay. There are not just one reward of 20 USD bonus. There are actually three rewards which Zbit is offering right now to all the new users and existing user. There is one reward for all of you. Okay. So let me explain where is my mouse. For all the YouTube and Twitter people, I will shortly, in a very quick manner, I will explain you what is the rewards. 1 second. Just give me 1 minute. Okay. Welcome user 914843. Welcome on the live stream. So for all the YouTube people and the Zibit people and X people, sorry, not Zibit people, for all the YouTube people and X people who are watching me right now and they don't know about the complete all the rewards which is there in the Zibit for all the new user, let me explain you those rewards to all of you. First, let's come to this platform. See, this is zbit.com. You can simply just search zbit.com and then our website will be there. This is the website. You can also have this scan this QR code and you can also see the app version of our Zbit in Android, not in iOS. iOS will take time. It will take time. Okay? It will take time. It's not there yet, but it will be soon, but not there yet. Okay, now so as we were discussing regarding this, like the users reward, what are the new users reward which Zbit is offering to all of the people, and what Zbit offering better than any other platform which is out there right now. So first, when you do like sign up is free. Opening an account is completely free. If you go on here and you click on a sign up thing, then you will come to this place. There is create an account. You can create your own account, pick your country code, whichever country code you are, wherever you are from, that is completely fine. Okay, then you add your email address, password, and that's it. Voila, you have entered into the crypto market. That's it. That is that simple. It was that simple. Actually, it's that exactly simple. It's not like, see, people sometimes like Indian people, they have this thing because see, we know, I get it, like opening any stock market account, opening a zero account was a little different because we have to provide so many documents and blah blah situations for that. But crypto market, very simple, very easy. Just three step you did. Country code, then you did your email address, then you did your password, and that's it. Voila, you have entered into the crypto market, the most profitable market at right now moment. And with that, like I said to you, like Zbit always takes care of their user. We have this thing like we cannot get, like we cannot lose you, we cannot leave you like struggling and blah and blah. So we appreciate your first step because you have taken a first step entering into the crypto market, the most profitable market at right now point. So how do we appreciate your first step? First step will be appreciated by giving you the first reward, that is a cryptocurrency token completely free, like legit free, like legit free. Like it's not like like red later I will ask you money, later I will do this. Nah, it's not like that. You will be getting it completely free of cost. It can be a mysterious thing and you don't know. See, I can show you right over here. There are three slides and three rewards. In the last one, can you see worth over $1,200 news reward? Get your first crypto asset at zbit.com. I'm not lying. It is actually there. How you can do is like, see, you get the mysterious lucky spin, in which there will be like almost 7 to 6 to 5 to 6 year list like cryptocurrencies. Your
that needle will be stopped on one, and that will be your cryptocurrency, which will be receiving completely free of cost. There is not even a single money you have to spend for getting that cryptocurrency into your wallet. Not even a single penny, I'm asking. Are you getting my point? Okay, so this is the first reward, and you did what? You just did the fill the three information, that is country code, email address, and password, and you have got the first crypto asset straight from the zbit.com. How lucky you are, and how lucky all your friends can be, how you're lucky your colleagues can be, how you're lucky your family can be. So do share a lot of people, like regarding this live stream, regarding this app, and regarding this 20 USDT bonus as well, which I'll be talking about, because there are some do's and there are some don'ts as well regarding that. Okay, so again, first reward, understood. What you have to do for first reward? Nothing. Just country code, email address, password, open account, and boom, you will be receiving the lucky spin first thing when you enter in the crypto market, and you will be having that XYZ cryptocurrency with you. Now, cryptocurrency has XYZ quantity. We are not offering you like one Bitcoin, one Ethereum, one Solana. No, obviously we don't want to go bankruptcy. It's a start of our journey. We don't want to end it at like level 2 only, or level 3 itself. Okay, to be very very frank. So obviously the currency which is above the dollar, the cryptocurrency which is above the dollar, we give you a small quantity of it, like some 0 point this, 0 point that, 0 point this. But still, even if, for example, I will just show you. Okay, I will just show you. One second. Okay, delete this. Let's go to chat GTP. I will show you one thing. Okay, 0.001 BTC value. Can you see? Where is it? Where is it? 0.001 BTC is 107. Can you see? It's like, it's not a small amount. It's actually a big amount, because that coin holds such a huge value. Give me one moment. Okay. So first reward, very simple, very easy. You understood the first reward. Now let's talk about the second reward. Second reward is like, you have to do some procedure before that, like basic KYC, basic XYZ, like do your KYC, complete your KYC, know your, like, see, every financial platform has a KYC.
Okay, so and it is not even like a very hard thing, bad thing. You just have to provide some identification proof, like if you are a genuine person or not. That's all. That's all. It's not a very big thing. It's not a very huge thing. It's a very small thing. After doing that one very small thing, you will be receiving a 20 USDT bonus amount. 20 USDT is not a small amount in INR. If I talk about in INR, let's say what is 20 USDT in INR. So you receive almost free currency worth 2000, almost 2000. Okay. So you receive a free currency worth almost 2000 in your account. Okay, and that too completely free of cost. There is no extra charges for it. Welcome user 289527 and welcome user 672990 on the live stream of Zero platform. Thank you so much for joining. Thank you so much for being a part of this live stream. My name is Yash. Can you also share me your name as well? Where you from? Where obviously you're from India, but where from India? And obviously, I told you one thing: all the Indian people, if you have a language issue, if you have a language issue, just comment Hindi. I will speak in Hindi. Okay. Don't forget this thing. You have to comment Hindi for me to speak in Hindi. Okay. And welcome user 179513. Welcome user from Indonesia. Thank you so much for joining. Thank you so much for being a part from this live stream. Okay. If you are having any issues, any doubt regarding Zbit, this is a platform where you can solve it. This is a platform where you can ask. This is a platform where you can help take help of everything. This live stream is not regarding just a very basic stuff. This is regarding for everything. Okay. Make sure that thing in your head. Now, regarding the second reward, you will be receiving a 20 USDT worth almost like consider 2000 rupee worth 2000 INR worth of USDT you will be receiving in your account. That you can use for the second reward, which is take a first free trade in the future trade. There are two options in the zbit.com, which I can show you over here. Trade have two options. One is futures, second one is spot. Future spot, future spot. Got it? Now, for the future spot, you get 20 USDT worth of investment bonus, which you can use. Okay, so 20 USD worth of free trade you can get from the future USD future trade. First trade, die, sit. Not second, not third, not fourth, not fifth, not sixth, not seventh. First one, first only. So you have to use that 20 USD in one go. You cannot do like I will use 10 right now, I will use 10 later. That won't happen. You have to use 20 USDT bonus in one go itself. Okay. Now, this is a best thing because see, if you put 20 USDT, you will be getting some XYZ profit from it. Let's say you got 10, let's say you got 15 USD profit, let's say you got 30 or 50 or 50 or 40. Who knows what kind of profit you might end up with? That profit is exactly completely withdrawable. You can withdraw that profit, you can take a trade with that profit, and it will stay in your amount balance. Why I'm saying it will stay? Because that 20 USD bonus, once you take a trade and that trade is closed, that 20 USD bonus will be gone from the market. It won't be there inside your account. So if you have question like where are 20 USDT bonus, and you will be left out with what? You will be left out with whatever XYZ amount of profit you earn. Even if you earn 100 USDT, we are okay with it. You can have that 100 USDT completely for yours, which you can withdraw, which you can exchange, which you can do anything because you are the owner. Got it? Okay. Now, same thing, like once you have taken the first trade is done, and then you can opt
to go for deposit and take new trades and new trades and new trades and new trades. Okay, once the first trade is done, you will be receiving. Hi. Welcome. There are so many users. Okay, welcome user 394552. Welcome user 61839. Welcome 69. Hello, hi, help me. I am here to help you. Please do tell me user 792461. What help do you need from me? Please do tell me the help which you need from me. I will be surely providing the help to you. And hi, hello, user 618 396. Can you tell me your name rather than calling you by the username? I want to call you by your name. My name is Yash, and I'm a live stream host over here. Hello, user 318861. Hi, hello, everybody. Hello. Thank you so much for joining. Thank you so much for being here. That's a spirit. Whenever you come on the live stream, you should first do is text. Hi, hello, my name. This bro, withdrawal कैसे करता है? I will explain. And also user 79246, I am ready to help you, but do tell me your issue first. Please help me, I will help you. I will, please tell me your question first, like what help you need. And user 7, प्लीज बता दे भाई. हाँ, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट बता रहा हूँ. पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में, उसके बाद में बताता हूँ कि एल्फर्ड Alfred. Alfred is your name. Alfred. Hi, Alfred. Thank you so much. My name is Yash. And user 318861, बता रहा हूँ कैसे करते हैं विड्रॉ. एक सेकेंड ना बस, मैं अपना लॉग इन कर लेता हूँ. लॉग इन करने का बताता हूँ कैसे करते हैं विड्रॉ. 2 मिनट दे दे बस भाई मेरे. इसी जाना नहीं है. यूजर 3188 बता रहा हूँ विड्रॉ कैसे करते हैं, बस 2 मिनट लॉग इन करने दे मुझे. अभी वेरिफिकेशन कोड भेजेगा. आ गया. क्या है 1 6 यही रहना है, यही रहना है. हाँ, तो विड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, अभी विड्रॉ करने के लिए 2 ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारा पैसा 2 जगह रह सकता है. एक तो फ्यूचर में रह सकता है या फिर एक स्पॉट में रह सकता है. तुम फ्यूचर से डायरेक्ट विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे? अब जैसा भी यहाँ पे अभी फ्यूचर में मेरे पास बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 है. मेरा पूरा बैलेंस अभी कहाँ पे, शायद तक इसमें स्पॉट में, ठीक है. तो विड्रॉ कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे कोई बैलेंस रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने फ्यूचर का ट्रेड किया, यहाँ का बैलेंस तुमको निकालना है. सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे करोगे क्लिक ट्रांसफर पे. जैसे ट्रांसफर पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे करोगे इस एरो को क्लिक, क्योंकि हम कर रहे हैं फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफर. जैसे फ्यूचर में स्पॉट से यहाँ पे यूएसडी क्लिक कर लिया, जो भी अमाउंट करना है, मतलब तुम्हें जो भी इच्छा है, तुमको 10 निकालना है, तुमको 20 निकालना है, तुमको 50 निकालना है, या तुम्हें 1000 निकालना है, ये तुम्हारी इच्छा है. तुमको कितना पैसा निकालना है, जो तुम्हारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है. उसके बाद में क्लिक किया, कंफर्म किया. ये पैसा तुरंत विद इन अ सेकेंड, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे. 1 सेकंड रुको. पहले अपन स्पॉट से फ्यूचर में लेके आते हैं. स्पॉट से फ्यूचर में मैं 7 लेके आता हूँ. क्लिक किया, कंफर्म किया, 2 मिनट में सक्सेस हो गया यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया,
रिफ्रेश करने के बाद में यहीं पे दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरा 7 यूएसडीटी आ गया है। ठीक है, ये कितना सिंपल था, दिख गया। अब मेरे को यहाँ से वापस फ्यूचर से मेरे को स्पॉट में डालना है, फिर मैं वही करूंगा। यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया, फ्यूचर टू स्पॉट डाला, कितना जाना है मेरे को 7 करना है, यहाँ से मैंने कंफर्म कर दिया और वो वहां पे चले गया। अब विड्रॉ की बात करते हैं। विड्रॉ कैसे करते हैं, तुमको पहले ये यहां से वहां, वहां से यहां कैसे करते समझ गया। अब विड्रॉ की बात करते हैं। स्पॉट से ही विड्रॉ होता है। ठीक है, स्पॉट पे क्लिक किया, ये स्पॉट मार्केट खुल गया। अभी फिर वापस में साइड में गया, अब ये साइड में दिख रहा है मेरे को क्या, विड्रॉल। मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया, विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद मैंने क्रिप्टो विड्रॉल, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको आईनो तो विड्रॉ करोगे नहीं, तुम यूएसडी विड्रॉ करोगे, तुम क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करोगे, क्योंकि है ही प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो विड्रॉल पे क्लिक किया। उसके बाद में अब जो भी करेंसी है अवेलेबल तुम्हारे पास, शायद तक मे बी बीटीसी होंगी, मे बी इथेरियम होंगी, मे बी कोई दूसरी होंगी, लाइक जैसे कोई शिबा है, कोई यूएसडी है, बिटकॉइन, इतने सारे ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारी जो भी करेंसी है, मोस्टली तो कॉमनली लोग यूएसडी ही विड्रॉ करते हैं, तो मैं एक जनरल उसका ही दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे। इसके बाद मैंने ब्लॉकचेन मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ब्लॉकचेन एक आपको पिक करना है, आपको जो भी अच्छा लगता है। ये पॉलीगॉन कर सकते हो, बीएनबी कर सकते हो, ट्रॉन कर सकते हो, इथेरियम कर सकते हो, या ऑप्टिमिज्म कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, विड्रॉल का एक फी होता है हमारा, जैसे प्लेटफॉर्म फी होता है वैसे विड्रॉल एक फी होता है, कि अलग अलग ब्लॉकचेन में अलग अलग विड्रॉल फी है। पॉलीगॉन मैं एक चीज मैं बता ही देता हूँ ना कितने कितने फी है। एक सेकेंड ना, मेरे पास है वो चार्ट। ठीक है, तो अगर तुम विड्रॉ करते हो ऑप्टिमिज्म से, कहा गया ऑप्टिमिज्म, हाँ, ये ऑप्टिमिज्म से विड्रॉ करोगे तो तुम्हें लगेगा 1 यूएसडी का ट्रांजैक्शन फी। ठीक है, अगर तुम विड्रॉ करते हो पॉलीगॉन से तो पॉलीगॉन से लगेगा तुमको 1 यूएसडी का। अगर तुम करते हो ट्रॉन से, ये क्या गया, ये हाँ, ये ट्रॉन TRC20 से करोगे तो तुम्हें 2.5 यूएसडी का फी लग सकता है, ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन फीस कैसे, मतलब अगर समझ लो, मान के चलते हैं तुम कर रहे हो 5 विड्रॉ, 5 यूएसडी तुम विड्रॉ कर रहे हो, तो तुमको मिलेगा कितना, 4, क्योंकि एक कहां गया, एक हो गया ट्रांजैक्शन फीस, ये एक कट गया ट्रांजैक्शन फीस में, तुम्हें मिलेगा 4 अगर तुम 5 करते हो तो। अगर तुम ट्रॉन लेते हो, जैसे ये ट्रॉन है, ये ट्रॉन में 2.5 यूएसडी ट्रांजैक्शन फीस है, 2.5 यूएसडीटी। तो अगर तुम 4 कर रहे होंगे तो तुमको मिलेगा 2.5 ओनली। अगर हाँ सॉरी, अगर तुम 5 कर रहे होंगे विड्रॉ तो तुमको मिलेगा 2.5 यूएसडी ही। क्यों, क्योंकि ट्रॉन की जो फीस है वो 2.5 है, इसलिए बोल रहा हूं ये बेस्ट बेस्ट होता है ये ऑप्टिमिज्म। इसमें सिर्फ एक लगता है, 1 यूएसडी का तुम्हारा फी होता है। तो अगर तुम 5 यूएसडी विड्रॉ करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक कट जाएगा, 4 तुमको मिल जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो इस पे जैसे मैंने अभी ऑप्टिमिज्म पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, जहां पे भी तुम्हारा वॉलेट में तुम चाहते हो, XYZ वॉलेट में जो भी तुम्हारा वॉलेट होगा उसका एड्रेस यहाँ क्लिक करो। यहाँ पे अपना ऑर्डर का अमाउंट कंफर्म करो। यूएसडीटी अगर तुमको विड्रॉ करना है तो तुम मिनिमम 4 कर सकते हो, 4 के नीचे 3 2 1 ये विड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम ही इसका 4 है, 4 से ऊपर कुछ भी, 4 5 6 10 15 हजार 2000 लाख, समझ गए। 4 से नीचे नहीं हो पाएगा, 4 मिनिमम है, 4 के नीचे विड्रॉ नहीं होता है यूएसडीटी में। सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, ट्रॉन का में भी अलग होगा, बीटीसी का में भी अलग होगा, इथेरियम का अलग होगा। मैं अभी फिलहाल यूएसडीटी के लिए बता रहा हूं। और ये ढूंढते कैसे है कि मिनिमम अमाउंट कहां पे है, कहां लिखा है ये सब, कि मैं कितना मिनिमम यूज कर सकता हूं। जब तुम विड्रॉल अमाउंट टाइप करते हो ना, वहीं पे तुमको एक ऐसा सिंबल मिलेगा, एक लेस देन इक्वल टू कुछ तो नंबर होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, ऐसा एक नंबर होगा इसके सामने। इसके बाद मतलब इसके बाद एक ऐसा नंबर आएगा। अब ये जो भी नंबर होगा वो तुम्हारा होगा मिनिमम अमाउंट नंबर। टाइप करने से पहले वो वहां पे लिखा हुआ रहता है, जैसे तुम उस पर क्लिक करके टाइप करने जाते तो वो चले जाता है। टाइप करने के पहले जैसे विड्रॉल अमाउंट दिखता है वहां पे एक ऐसा सिग्नल दिखेगा, ये साइन सिंबल लेस देन इक्वल टू का, और वहां पे कुछ तो नंबर होगा, ये होगा आपका मिनिमम मिनिमम बैलेंस। हाय, दिस इज अक्षय, वेलकम अक्षय 5 6, वेलकम अक्षय ऑन द लाइव स्ट्रीम। एनी डाउट, एनीथिंग for me, I can be at your service. Just tell me what is required for you. You want to know what, any doubts, anything, or you just hi hello. So
हाय अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ, तो मैं वापस आ जाता हूँ। ये मैंने एड्रेस डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, अमाउंट के डाल में कंफर्म कर दिया। विद इन हार्डली मैक्स टू मैक्स लगेगा 20 मिनट, कम से कम लगेगा 5 मिनट। 5, 10, 15 या 20, उतनी देर में आपके वॉलेट में वो हो जाएगा विड्रॉ, वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक और चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम विड्रॉ करते हो फिएट से, ठीक है, तुमने नॉर्मल तुम क्रिप्टो करेंसी पे विड्रॉ नहीं कर रहे, तुमको चाहिए फिएट वाला डिपॉजिट या फिएट वाला विड्रॉ, तो अगर तुम करते हो, समझ लो 100 यूएसडी के ऊपर। So, did you speak English very well? Yes, I can speak English very well as well. It's just like some users are here from India as well. So, I have to opt an Indian language for them. But if you say that I want to speak, you want to listen me from English, then I can speak English as well. Okay. So, you don't have to worry. Please, user 618396, I can speak in English as well. You don't have to worry. You can ask me any of your doubt. You can ask me any of those things. I'm just explaining them what and how to do a withdrawal in our platform. That's all. Okay. So if you want, I can explain the same thing in English as well. If you want, yes, just type yes in that platform, like how to do it. Okay. Just comment yes, I want to know how to withdraw in English, and I will explain the same procedure in English as well. I do speak in English very well. I can understand you as well, and you can understand me as well. Okay. So user 618396, Alfred. Yes, you want to know how to withdraw the cryptocurrency from the Zbit app. I will tell you in English as well. Okay. So first thing, if for example we have two trades over here. One is future and one is spot. You may have a future balance as well, like there are XYZ amount over here available balance to trade. Okay. And in the spot as well, there are some amount balance over here. So to change, because only from the spot, only spot has a withdrawal option. So, and future don't have that withdraw option. Okay. So what you can do is, if you want to do futures amount withdraw, first thing is transfer. Click on the transfer and you will be transferring from future account to the spot account for the withdrawals. Got it? Once you click on that transfer from future to spot, click XYZ amount, or you can pick your other currency as well. Okay, you want to have BTC, Ethereum, XYZ, whatever is available for you, you can pick that. Right now, I only have USDT, so it is only showing me USDT. Got it? Okay. After that thing, you can pick your amount, XYZ amount. I want 5 transfer, 2 transfer, 3 USDT transfer, 5 USDT transfer. You can pick, confirm it. It will be deposited into your spot account within fraction of seconds. Okay. Then we come on the spot and then come over here. Can you see a withdrawal option over here? Click on that withdraw option. Then you will see crypto withdrawal over here. Click on that crypto withdrawal and click your currency, XYZ currency, what currency you have. These are this many options you will be getting. All these are cryptocurrencies. Okay. Whatever cryptocurrency you will be having, click on that. Generally, people opt to is USDT. I clicked on that. Then every blockchain, you have to pick one blockchain via which your transaction will be done from our place to your wallet. So you have to opt one blockchain system. Okay. How much option you have? You have Polygon, you have BNB, you have Tron, you have Ethereum, and you have Optimism. See, every of those blockchain system will be having some transaction fees, like maybe 1 USDT, maybe 2.5, or maybe 2. Every has different. Like Optimism takes 1 USDT. So for example, if you want to withdraw 5 USDT, that Optimism platform will be taking 1 USDT and the rest 4 you will be having. Got it? So same like this, Tron. If you do it from Tron takes 2.5 USDT as a transaction fees. So it's better, like why even use Tron if you can use Optimism and just have 1 USDT as a transaction fees. Everything is compulsory. There is no such blockchain which will give you free. There is no such things. Okay. So
last the most minimal transaction fee is 1 USDT, which will be giving from the optimism. Click on that optimism, then copy paste your wallet address. You obviously know where your wallet address you can find. Copy paste your wallet address, then your crypto withdrawal amount. Now, Alfred, every currency has a minimum amount. You will be noticing it that when you see that, when you copy paste your wallet address, you will be noticing that there is one symbol like this. Like, one second, I will be deleting it. There will be one symbol like greater than equal to, like some kind of like this symbol, and there will be some number, maybe 3, maybe 4, maybe 5, maybe 6. That is a minimum amount of that XYZ currency. USDTs, if you are withdrawing USDT, minimum you can withdraw is 4. Okay, not less than 4, not 3, not 2, not 1, 4, or maybe more than, maybe 5, maybe 6, maybe 10, 20, 30, 40, or something like this. भाई बता दो, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं उसकी भी मदद कर देता हूँ। यहाँ 2-3 लोग हैं, एक को बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। बता रहा हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ, ठीक है। सो अल्फ्रेड, आई गेस मैं देख रहा हूँ भाई, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ। पहले मैं उसे समझा देता था, मैं पहले उसे समझा रहा हूँ, वो जैसे समझ गया, फिर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा कि आपको जो भी एक तकलीफ है, जो भी चीज आपको पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट में दिख पा रहा है मुझे, पर मैं एक प्रोसेस में हूं ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ। एक बार जब मैं वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बताना, उसका जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कोई टेंशन की बात नहीं, मैं यहाँ पे 4 घंटा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ही रहूंगा 4 घंटा। So, Alfred, I hope you have understood how to use the withdraw thing. And same you can do it for the deposit as well. Click on the deposit. You can see over here crypto deposit, currency, whatever currency you want to deposit. Let's go for the USDT. Then click again your network, same optimism you will click because that's the best. And then scan or copy paste this address and just do the deposit. That's all. It is that simple. I hope you have understood this thing, Alfred. I hope. Yes. Thank you so much. Okay. Cool. Yes. User 318861. क्या चाहिए था तुम्हें? भाई शांति नहीं रह रहा था यार. कहाँ गया हूँ? एड्रेस कहाँ मिलेगा? एड्रेस वैलेट कहाँ मिलेगा ब्रो? ओके, सो हाँ, यूजर 31, फिर से क्या बता दो, एड्रेस कहाँ मिलेगा? मैं वॉलेट एड्रेस की बात कर रहे हो क्या? किस में वॉलेट एड्रेस कहाँ मिलेगा? अपने जब ऐप पे जाते हो, अभी मेरे पास सुनो ऐप नहीं है, क्योंकि वो ऐप में दिखता है बराबर, हाउ मच आई कैन डिपॉजिट जीबिट फॉर ट्रेड। इट इज अप टू यू Alfred, it is exactly up to you. You can deposit, let's say, maybe it can start from 1 as well, it can start from 10 as well, it can start from 50 as well, 100 as well, or 1 lakh as well. It's up to you. But if you are a new user and you don't know the trading much well, so I suggest you deposit somewhere in between, maybe like 50 to 100, somewhere in between that. Click on the live stream. There is 2 options, like there is one option is of deposit recharge, and there is of take a trade. So if you're a new user, tap on the deposit option and deposit somewhere in between 30, 40, 50. So, and to be very frank, to be very honest, yes, you will be facing losses in the starting because you're a new user. Okay, you don't know about trading. If you don't know about something, so there is obvious thing that you might face some losses. There is obvious thing that you might face some rejections. Okay, so deposit not too less amount that you cannot see even profit, because if you deposit, for example, you deposit 10 USDT, you won't be able to see that good profit from that just small 10 USDT. Okay, so at least deposit somewhere around 50 to, भाई विड्रॉल करने के लिए कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है? जीबिट से ही विड्रॉल हो जाता है, उसके लिए कोई सेपरेट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जीबिट से ही विड्रॉल हो जाता है।
Hi user 564558, and yes, Alfred, deposit somewhere in between 30, 40 or 50 USDT, which can give you like maybe 5 USDT profit, 10 USDT profit you can also receive from that. Okay, so don't go too much minimum, like 10, 5 is too low. You cannot see some good profit from that. But to gain a good amount of experience as well, you can should deposit 30, 40, 50 USDT. So even if you face loss, it won't be big loss, because the true amount which can give you a very good amount of profit every day, maybe 50, maybe 60 USDT profit, that is 1000 to 2000 to 5000 USDT. That is an amount which can give you a daily 100 to 50 USDT profit. That is the amount. Okay, but as you are a beginner, I would suggest go for 50, 60, 70, so that even if you face loss, it won't feel too much pressure for you. Okay, and you can gain a good amount of experience from the losses. Whenever you face a loss, that is a lesson to learn. Okay, cool. So भाई विड्रॉल, पहले तो यार तू पहले यार नाम बता दो यार। 318861, आपका नाम बताओ पहले तो। बता दो, मैं बता दू यार, जीबिट से ही हो जाता है, ऐसे कोई सेपरेट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है विड्रॉल के लिए। जीबिट से ही ये दिख रहा नहीं है क्रिप्टो विड्रॉल, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल है। फिर कोई दूसरा ऐप डाउनलोड क्यों करना है जब क्रिप्टो विड्रॉल यहाँ पे दिया हुआ है? बता दो दिया भाई, क्रिप्टो विड्रॉल जीबिट को ही डाउनलोड करना, और क्यों करना है दूसरा को डाउनलोड? दूसरी ऐप डाउनलोड करना ही क्यों है जब यहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल दिया है? हम मैं ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जीबीटी प्रोवाइड कर रहा है क्रिप्टो विड्रॉल, तो दूसरा ऐप डाउनलोड करना ही क्यों है? इसके अंदर जीबिट का ऐप है क्या? एक सेकंड ना, जीबिट। प्लीज, मैं बताया भाई, मैं बताया जीबिट ही डाउनलोड करना। जीबिट से ही तो होता है विड्रॉ, और कहां से विड्रॉ होगा? जीबिट से ही, जीबिट का पैसा जीबिट से ही विड्रॉ होगा। जीबिट का पैसा विड्रॉ करने के लिए कोई तीसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पहले तो नाम ही बता दे यार मेरे को तेरा, मेरा अच्छा लगा तो, मतलब यू आर नाइस पर्सन, आई रियली अप्रिशिएट इट। जो है ना एकदम लाइक क्यूरियोसिटी है तेरे अंदर, एकदम लाइक यू वांट टू नो दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव। अभी अभी चाहिए मेरे को सोल्यूशन, अभी। वैसा है यार, मेरे को अच्छा लगा। बट सी, दिस इज नाइस थिंग दैट यू आर लाइक connected to that live stream that much, like right now only I want to know everything. So yes, I like I said to you, यहीं से जीबिट से ही विड्रॉल हो जाता है। अभी मेरे पास नहीं, क्या रहा, एक एंड्रॉइड फोन नहीं है यार, मेरे को एक एंड्रॉइड फोन चाहिए, क्योंकि मैं ना फिर मैं ऐसा ही करके ना ऐप में दिखा दूंगा सारी चीजें कि देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना ये प्लेटफॉर्म पे उतनी मतलब वेबसाइट पे उतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं होती जहाँ पे ऐप में होती है। तो मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है यार। ये वाला एंड्रॉइड फोन है, इस पे मैं दिखा सकता हूँ, पर फिर इस पे तो मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं इससे ही इसको कैसे दिखा सकता हूँ ना, मतलब। बाकी तो प्लीज यूजर 318861, प्लीज आपका नाम बता दो यार, मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, नाम क्या है, काम क्या है, शहर क्या है। विड्रॉ का प्रोसेस बता दिया है, दिस इज, ये यहीं से विड्रॉ होगा, और कहीं से विड्रॉ नहीं हो पाएगा, सिर्फ यहीं से विड्रॉ हो पाएगा। Welcome user 553911. Welcome to the live stream of Zbit platform. Thank you so much for Sadiq. Sadiq. सादिक, सादिक जी, हाय, मेरा नाम यश है। विड्रॉ करने के लिए सिर्फ जीबिट का ऐप ही है। सादिक जी, जब आप ऐप खोलते हो ना, ऐप के नीचे में यहाँ पे ना एक बैलेंस में ना बहुत सी चीज दिख रही होगी, जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मैंने अब भी देखा हो।
आपके पास होगा होम मार्केट फ्यूचर स्पॉट। यहाँ पे जैसे वो ऐप खोलते हो ना, तो यहाँ पे सबसे नीचे में दिखता है यहाँ पे कि होम है, मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, और यहाँ पे बैलेंस है। वो बैलेंस पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपको सारी डिटेल, आपका एड्रेस, आपका ये, आपका वो सारा उधर ही दिख जाएगा। वो बैलेंस पे क्लिक करो आप एक बार। बैलेंस पे क्लिक करके आपको सारी चीजें दिख जाएगी वहां पे। अभी तक मुझे 6,000 लॉस हो चुका है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट करना ही क्यों है जब क्रिप्टो मार्केट इतना बढ़िया है? सादिक जी, सादिक जी, क्रिप्टो मार्केट में ना अच्छा खासा प्रॉफिट मैं दिला के दूंगा। एक तो मैं पहले आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बताओगे। आप मेरे को ना बंदे अच्छे लगे, इसलिए मैं अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूं कि एक पैसे मतलब एक हल्का इन्वेस्टमेंट भी कितना होगा, मतलब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा भी नहीं। पकड़ के चलो 20-30 हजार के इन्वेस्टमेंट, और पैसा कितना लेके आ पाओगे उसमें से? ऑलमोस्ट 10 से 20 लाख का इन्वेस्ट, 10 से 20 लाख का प्रॉफिट। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान मैं बताता हूं जिससे तुम पैसा डालो बहुत कम पर मिलेगा बहुत ज्यादा। ये इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे ढूंढते हैं, किस कैसा कॉइन कैसे ढूंढते हैं कि अच्छा कॉइन कौन सा है अभी। और बहुत सी चीजें होती है ना कि यार समझ में नहीं आती यार कौन सा कॉइन है जो अभी बहुत पॉप कर रहा है, कौन सा कॉइन है जो बहुत प्रॉफिट दे रहा है, पता ही नहीं चलता है कब मार्केट पॉप हो जाता है। तो मैं बताता हूं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले तो कमेंट कर दो सादिक जी कि हाँ मुझे जानना है। भाई मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं अभी स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट है तो सबसे तो सही है, स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेस्ट है ये। मैं इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूं ना अपना, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे मैं भी खुद वैसे ही इन्वेस्ट करता हूं अच्छे अच्छे कॉइन में, और अच्छा अच्छा रिटर्न मिलता है। जानना है तो यस, जानना है ना, चलो जानते हैं ये। सबसे पहले ना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, क्योंकि कॉइन देखना भी तो है कौन सा अच्छा चल रहा है, राइट? तो यूजर 564 सारे इंडियन है ना यहाँ पे, क्योंकि फिर मेरे लैंग्वेज का इशू नहीं आना चाहिए कोई। यस यस, मैं बताता हूं, पर सबसे पहले मेरे को एक चीज बता दो कि यहाँ पे 4 लोग हैं, वो चारों के चारों इंडियन है क्या? तो मैं हिंदी में बताता हूँ, नहीं तो अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा होगा तो मैं उसे इंग्लिश में भी समझा दूंगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सारे सारे इंडियन है ना यहाँ पे, कि कोई कहीं और से है? नहीं तो फिर मैं हिंदी की जगह इंग्लिश यूज करता हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यस 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 यस, एक बार ना सारा हिंदी 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 कर दो। सारे लोग जितने भी है ना, जिनको भी हिंदी में जानना है, सारे हिंदी 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 टाइप कर दो कमेंट में, तो मैं हिंदी में चालू कर दो अपना समझाना एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बहुत सिंपल है, अच्छा पैसा रिटर्न लाके देगा। इंडियन 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 समझ गए, हिंदी हिंदी हिंदी, ओके चलो हिंदी में चालू करते हैं फिर। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये सर्च क्या करना है? ट्रेडिंग व्यू, बस इतना सिंपल, और कुछ नहीं सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। यहां पे एंटर कर दिया, पहला ही जो सबसे पहला दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट, इस पे हमने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे जो 3 बार दिख रहे हैं मेरे को, ये 3 बार पे मैं जाऊंगा। 3 बार पे जाने के बाद मेरे को जाना है मार्केट में। मार्केट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे हम लोग, और कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई स्टॉक नहीं, कोई इंडेक्स नहीं, कोई फ्यूचर, कोई कुछ नहीं, सिर्फ क्रिप्टो। क्रिप्टो पे क्लिक किया, और यहां पे जाके ना ये ओवरव्यू में जाना है, ये ओवरव्यू दिख गया, उस पर क्लिक कर दिया, बस। थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया। अब यहाँ पे ये चीज दिख गई मेरे को, ये दिख रहा है, ये क्रिप्टो कलेक्शन। इसमें ये क्या है? फिल्टर आउट वर्जन है, सारे क्रिप्टो के फिल्टर आउट वर्जन। अभी सबको देखना थोड़ा इंपॉसिबल हो जाता है कि मैं सबको कैसा देखूं, सबको ट्रैक कैसे करूं। तो इसलिए क्रिप्टो कलेक्शन क्या करता है ना, यहाँ पे ये फिल्टर आउट वर्जन देता है क्रिप्टो करेंसी के। अब इसमें से कौन से देखने हैं? इसमें से देखने हैं 3, सॉरी 2, दो ही देखने हैं। एक देखने हैं लोएस्ट सप्लाई, और एक देखना है 52 वीक हाई। अब ये लोएस्ट सप्लाई क्यों और 52 वीक हाई क्यों, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। लोएस्ट सप्लाई क्या होता है अभी समझ लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, गोल्ड का जो प्राइस है वो कम है, पर डायमंड का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लाई,
डायमंड इस दुनिया में बहुत कम है, गोल्ड उससे ज्यादा है। तो जिस चीज जो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है उसका प्राइस कम रहता है, जो चीज बहुत कम अवेलेबल रहती है इस दुनिया में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। सेम वे यहां पे जब ये लोएस्ट सप्लाई दिख रहा है, लोएस्ट सप्लाई में क्या हो गया कि यहां पे ऐसे कॉइन देखने मिलेंगे जो बहुत कम है क्रिप्टो करेंसी में और जिसकी वैल्यू रहेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, एक ये देख लिया, लोएस्ट सप्लाई समझ गया। और दूसरा हम देखेंगे 52 वीक हाई। अब ये 52 वीक हाई क्या होता है? पहले तो 52 वीक होता है एक साल, एक साल में होते हैं 52 वीक। ठीक है, 52 टू 53 वीक। अब ऐसे ये कॉइन दिखाता है जो पूरे साल भर में बहुत अच्छे परफॉर्म किए, मतलब जिसका प्राइस सिर्फ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये 52 वीक हाई में ये कॉइन दिखाता है। ये हमने दो कॉइन देख लिया। पहले मैं जाता हूं 52 वीक हाई में, फिर हम जाएंगे लोएस्ट सप्लाई में, दोनों हम चेक करेंगे। ठीक है, 52 वीक हाई में मैंने क्लिक किया, उसके बाद अभी आज मेरे को कितने कॉइन दिख रहे हैं? 16। यहां पे दिख रहा है कॉइन 16 कॉइन दिख रहे हैं मुझे यहां पे। समझ गए? अब ये 16 कॉइन में से मुझे कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है ये मैं कैसा पता करूं? उसके लिए सबसे पहले हम क्या जाएंगे, बाजू में ये दिख रहा है परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस से हमें क्या दिखेगा कि कितना कॉइन की कितनी बढ़त हुई है, कितना उसका ग्रो हुआ है, ये हमें पता चल जाएगा। अब इस पे फोकस कौन से कॉइन पे करना है? पहले तो अपन एक कॉइन फिक्स कर लेते हैं। परफॉर्मेंस पे गया मैं, परफॉर्मेंस, यार वो बार का है। ठीक है, ये मैंने साइड किया। अब इस पे परफॉर्मेंस में देखना एक चीज, यहां पे तुमको क्या दिखेगा? एक वीक, एक मंथ, 3 महीना, 6 महीना और पूरा साल, 5 साल, 10 साल और ऑल टाइम। अभी हमें कौन से कॉइन पे फोकस करना है? बी, व्हाट डू मीन बाय बी? यूजर 360422 ने बी कमेंट किया है। बी का मतलब क्या होता है भाई? जान दो, जाने दो, उसे जाने दो। तो ठीक है, यहां पे परफॉर्मेंस में क्या क्या चेक करना है? ये परफॉर्मेंस चालू होती है कहां से? एक हफ्ते से, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर ये साल, 5 साल और 10 साल। ठीक है, अभी ये पूरा उसका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है कि उसने पूरे ये साल भर में कैसा परफॉर्म किया। अभी हम इसी में हमें देखना है कि ऐसे कॉइन जो है ट्रिपल से 4 डिजिट के परफॉर्मेंस में, ये हमें ये वाले नहीं चाहिए जो 1%, फिर 14, फिर 8, फिर 19, फिर 96, फिर 46। ये छोटे छोटे हो गए, ये हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए बड़े बड़े, जैसे हो गए ये जैसा हो गया। अभी जी कैश 25, 87, फिर होगा 400, 1000, 1500, 1300, 1000, ये हो गया उसका बढ़त पर, उतना परसेंट वो बड़ा है। हमें ट्रिपल और 4 डिजिट के परफॉर्मेंस देखने हैं बस। ये एक दो डिजिट वाले परफॉर्मेंस हम नहीं देखेंगे। हमें वो वाले कॉइन चाहिए ही नहीं जो बहुत स्लो बढ़े, हमें चाहिए कि बहुत जल्दी पैसा मिले और जल्दी हम प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा क्या करना है, ऐसे परफॉर्मेंस के लिए बड़े बड़े जो परफॉर्मेंस, जैसे ये जी कैश हो गया, एक जी कैश हो गया। ठीक है, इसका पूरा ग्रोथ देखना, 1000, 1000, 1000, 1000, अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एक ये देख लिया, उसके बाद दूसरा, दूसरा, दूसरा। अब यहाँ पे गोल्ड बीएनबी, ये 8000 से चालू है पर ये महंगा ही होगा ऑब्वियसली, तो उसे हम जाने देते हैं। सस्ता कौन चाहिए हमें? एक हो गया ये कॉन्डोर कॉन्डोर डीएम, जिसका भी अच्छा बढ़त हो रहा है। 30 से 100 हुआ, 100 से 400, 400 से 700 हुआ। और फिर कहाँ गया वो कॉन्डोर? 700 से 800, 800 से, तो ये अच्छा कॉइन है। ठीक है, एक ये देख लिया और एक डी एजेंट एआई देख लिया, जो भी हजारों में 5,000 का प्रॉफिट पे है, तो वो भी एक अच्छा कॉइन है। ठीक है, अभी हमने परफॉर्मेंस देख लिया, सबसे पहले हमने सिर्फ परफॉर्मेंस देख लिया। आर यू गिविंग क्रिप्टो सिग्नल्स? I am not giving crypto signals. I am telling a investment plan. Alfred, I'll be telling you separately in English the same scenario again in English. Let me just explain it to the Indian people first, and then I will explain it to you as well. Don't worry about it. Okay. First, let me explain it to the Hindi people, and then I will change my language to English, and I will explain to you. You don't have to worry. You won't be left out. You don't have that FOMO, fear of missing out. Okay. I will be explaining you again. Don't worry. ना, अभी हमने सबके परफॉर्मेंस चेक कर लिया, जो जो हजारों में है हमें उन्हें उन्हें ही देखना है। ये ध्यान में रखना है ये चीज।
हमें ये 10%, 20%, 30%, 50, 60 ये वाले कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है जो ये से 6000% बढ़ चुका है, 1000% बढ़ चुका है, 400, 5000, 5000, ये ऐसे जो क्विक बढ़त है हमें उसी में ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में हम आते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे आने के बाद में अभी हम क्या चेक करेंगे, हम प्राइस चेक करेंगे। ये प्राइस, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट के लिए पैसा थोड़ा तो ऑब्वियसली कम ही है, इन्वेस्टमेंट का पैसा थोड़ा कम लगता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है हमारे पास, हमको कम पैसों में ज्यादा बढ़त करनी, तो कैसे करें। अभी हम ऐसे कॉइन पिक करेंगे इसमें से जो है $1 के नीचे, $1 भी नहीं है, $1 के नीचे, 0.this, 0.that, 0.this, 0.that, ऐसे कॉइन चेक करना है हमें। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ गया ये बे मरीना प्रोटोकॉल, फिर आ गया ये भी है बिट कैसल टोकन, उसके बाद कोका, उसके बाद डे ड्रीम्स, और हाँ ये डाइनो टाइकोन भी हो गया। ठीक है, अब ये सारे कॉइन कैसे हो गए, अंडर अंडर $0 के अंदर है, अंडर $0 मतलब $0 भी नहीं है। ठीक है, उसके भी नीचे है ये, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा क्या है इसमें, कम लगेगा, बहुत कम पैसा लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं, अब इसमें से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये टाइकून पर मैंने क्लिक किया, अब ऐसे मैंने टाइकून पे क्लिक किया। अब इसका सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि ये पहले कॉइन कौन सा है, ये स्टैट, इसका सप्लाई 1 बिलियन, सर्किट स्मॉल है, वॉल्यूम वगैरह दिया नहीं, ऑल टाइम हाई भी दिया है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस कॉइन में मैं इन्वेस्ट करूंगा। इस कॉइन का मैं कॉइन कितने खरीदूंगा इसमें, एटलीस्ट नहीं नहीं बोल के मेरे को कम से कम 20,000 से लेके तो 30 से 40,000 मेरे को कॉइन खरीदने। अब ये प्राइस क्या चालू है इसकी, इसकी प्राइस चालू है 0.02। ठीक है, अभी मैं चैट जीपीटी में दिखा रहा हूँ इसे। हाँ, if coin that 0.02, 0.02, 0.262626, I want 1000। कितना, 13,000 USD। कितना बना हुआ आईएनआर में, यस, लेट्स कैलकुलेट इन आईएनआर एज वेल। 1300 USD, 1300 USD हो गया अपना 1 लाख के आसपास, 1,15,000 इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हो गया 4,000। ठीक है, यहाँ पे हमने किया 4,701, और यहाँ पे आईएनआर में इतना हमको इन्वेस्ट कितना करना है, 1,300। एंड नाउ इट डिपेंड्स, ये कॉइन पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें कितना, मैंने बोला है 50,000 कॉइन के लिए, 50,000 कॉइन के लिए बोला है। तुम 10,000 भी खरीद सकते हो, जरूरी थोड़ी कि तुमको 50 ही खरीदना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी कम पैसों में हमें ज्यादा कॉइन खरीदने हैं, मेरे पास 50,000 कर लिए, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1300 USD का, 1300 USD का मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो होता है कुछ लाख के बराबर। मैं वो कम भी कर सकता हूँ, मतलब क्वांटिटी अगर तुम कम करो तो कम भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही ये कॉइन $1 का हो जाएगा, अभी क्या चालू है 0.26, हमें वेट क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, $1। ये कॉइन हो जाएगा सिर्फ $1 का। जैसे ये कॉइन $1 का हो जाएगा, व्हाट इफ द कॉइन टच $1, my profit will be। तो अभी ये कॉइन पहले इन्वेस्ट कर दिया, 1,300 डॉलर का मैंने इन्वेस्टमेंट मार दिया। अब उसके बाद में मेरा प्रॉफिट कितना बना है इस पे, यस, आईएनआर में कन्वर्ट करो प्लीज। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्ट किया था 1300, मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 48,700 USD रिटर्न। ठीक है, अब उसमें आईएनआर में कितना हो जाता है, ये 43 लाख। कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख।
कितना वापस मिला? 43 lakhs का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला। ये ऐसे ही इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में। अगर स्पॉट में करना चाहते हो तो, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना है, मत करो, कोई टेंशन नहीं है। स्पॉट में करना है, ऐसे ही कॉइन में इन्वेस्ट करना है जो पहले क्या है, $1 से भी नीचे है, 0 पॉइंट समथिंग में होनी चाहिए वो। तो जैसे ही वो $1 में निकला और 0 पॉइंट में है, हमें क्वांटिटी अच्छी खरीदनी है, 5,000, 10,000, 15, 20, 30, 40, 50, 1 लाख, ऐसे क्वांटिटी खरीदनी है हमें कॉइन्स के लिए। क्वांटिटी खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब बस वेट करो, मे बी 6 महीना, मे बी 1 साल, मे बी 2 साल। 2 साल में वो कॉइन हो जाएगा $1 का। 2 साल का जो प्रॉफिट निकला, कितना निकला? इन्वेस्ट क्या किया? 1 लाख। अगर 50,000 कॉइन चाहिए तो, अगर 50,000 कॉइन चाहिए, इन्वेस्ट क्या किया? 1 लाख, मिला कितना? 43 लाख। 2 साल में 43 लाख मिल सकता है प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी से। और 2 साल तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, वो 2 साल के अंदर ही होगा, इसकी गारंटी भी मैं देता हूँ। समझ में आ गया कैसे करना है? पर मेक श्योर करना कि जो कॉइन का परफॉर्मेंस अच्छा है उसी पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे 52 वीक में जिनका ये परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस, अब जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर तुमने लगा दिया माइनस में, ये दिखा तुमको माइनस माइनस माइनस, ऐसे कॉइन में पैसा लगा दिया तो ऑब्वियसली बहुत कम पैसा मिलेगा, मतलब मे बी ज्यादा लॉस हो जाएगा। हमें उन्हीं कॉइन पे पैसा लगाना है जिनका परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा दिख रहा है, जो हजारों में, जैसे ये हो गया, हजार 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 हजार, इसका भी परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं पर थोड़ा अच्छा ही है, 10, 30, 30, 30, 30, ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करना जिसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। कितना? सिर्फ वीक नहीं, महीने में भी अच्छा है, 3 महीने में भी अच्छा है, 6 साल में भी अच्छा है, 6 महीने में भी अच्छा है, साल में भी अच्छा कर रहा है। जैसे कहा गया वो बे 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 हाँ ये साल में भी अच्छा है, 6 महीने में भी अच्छा है, ईयर में भी, 1 साल, 5 साल, हर इसमें ग्रीन 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 ग्रीन। सिंपल सा मतलब है, हमें जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाना है, हारने वाले घोड़े पे पैसा नहीं लगाए। जो घोड़ा हर साल जीत रहा है, हर साल पूरा सिर्फ ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब गुड, अच्छा ग्रो कर रहा है, उसी घोड़े पे हम पैसा लगाएंगे। वही घोड़ा जल्दी भाग के $1 बनेगा और वो प्रॉफिट हम लेके आए। समझ गए? बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत सिंपल, ये होता है एक इन्वेस्टमेंट का प्लान। अब ये कर दिया मैंने 52 वीक हाई के लिए। अब हम चलते हैं लोएस्ट सप्लाई। लोएस्ट सप्लाई में भी ऐसे ही कॉइन होंगे, पर लोएस्ट सप्लाई में ना तुम देखना कभी प्राइस बहुत हाई 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 प्राइस होंगे। अब इसमें से हमें इन प्राइस में हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं, हमें कौन से प्राइस में इन्वेस्ट करना है जो $1 भी नहीं है? ढूंढो, मिलेगा। एक तो होगा, आज एक भी नहीं, ठीक है? रोज रोज नहीं रहते, रोज देखना चाहिए, रोज फिल्टर आउट करो, एक ना एक प्राइस मिलेगा जो जीरो से भी नीचे रहेगा, उन प्राइस पे हमें करना है इन्वेस्टमेंट, तब जाके मिलेंगे एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट। समझ गया? और ये जो क्रिप्टो का जो फिल्टर आउट वर्जन है ना, ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये मोस्ट वोलेटाइल में कैसा ना, मोस्ट वोलेटाइल में तुम बहुत जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे वो होता है ना कि एकदम से मार्केट 5% नीचे गिर गई, एकदम से 10% ऊपर चली गई, ये होता है कैसे? ये मोस्ट वोलेटाइल में होता है। तो ये सारे फिल्टर आउट वर्जन है, जैसे SGC, BTC टोकन, कायवू, जिनवू, फर जीपीटी, गोल्ड पिट का, गोल्ड BNB, जाहिनमी, टोमी, करेज द डॉग, ये सारे कॉइन क्या है? ये सारे कॉइन वो है जो बहुत जल्दी वोलेटाइल होते हैं, एकदम से जल्दी गिर जाएंगे, एकदम से जल्दी उठ जाएंगे। अब ये हमें कहाँ काम करता है? प्रॉफिट लेने। फ्यूचर में मोस्ट जितना वोलेटाइल मार्केट है उतना फ्यूचर में प्रॉफिट जाना मिलना उतना आसान है। बट ट्रेड अगर तुम्हारा सही लगा हो तो, अब तुमने ट्रेड लगा लिया बाय का और मार्केट गया धड़ 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 नीचे, पूरे 5% के नीचे, तुम्हारा लॉस हो गया। अगर उसी टाइम पे सेल का ट्रेड होता तो 5% का प्रॉफिट मिलता, बड़ा प्रॉफिट मिलता। तो ये होते हैं कहां पे? मोस्ट वोलेटाइल मार्केट में, ठीक है? ये 3 याद रखना हमेशा, मोस्ट वोलेटाइल, मोस्ट ट्रांजैक्शन, ये दो तुम्हें फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत काम आएगी, मोस्ट ट्रांजैक्शन और मोस्ट वोलेटाइल में, क्योंकि यहाँ पे डेली डेली ट्रेडिंग होगी अच्छी वॉल्यूम पे, जो हमें चाहिए।
स्टॉक मार्केट में कैसा बहुत स्लो, 0.001, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, मतलब मार्केट को 5% का प्रॉफिट देने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लग जाते हैं, जो कि यही मोस्ट वोलेटाइल मार्केट में, अगर क्रिप्टो मार्केट में जाओ तो वही प्रॉफिट 5 से 10% का मतलब मार्केट का उठना या गिरना 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। तो प्रॉफिट हमें बस वो एक उस पे ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मुझे एंटर करना है और यहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। समझ में आ गया? बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है 52 वीक हाई वाला। हमें बस वो वाले कॉइन देखना है जो $1 होने का है, $1 भी नहीं है अभी, 0 पॉइंट में है। अच्छा क्वांटिटी में बाय करके रखना है और छोड़ देना है, भूल जाना है कि मेरे पास है वो कॉइन। चेक करते रहना है, 2-2 3-3 महीने में चेक करते रहना है कि क्या चल रहा है, और जैसे ही वो $1 का हो गया, बेच दो, प्रॉफिट ले लो, चले जाओ। लालच नहीं करनी कि ये $2 $3, क्यों मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे जैसे ही बहुत से लोग हैं जो सेम चीज करते हैं, ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं जो $0 है, जैसे ये हो गया 0.13। अच्छा क्वांटिटी वो पहले बाय कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा भी यहाँ पे, अगर कोई जिसकी वैल्यू ही नहीं है, जीरो की वैल्यू है, तो उसमें पैसा कम लगता है, राइट? अब ये क्या करते हैं, बड़ा बड़ा उसका अमाउंट कॉइन, 10,000 कॉइन, 20,000 कॉइन लेके रख देते हैं और भूल जाते हैं कि मेरे पास है। जैसे ही ये कॉइन $1 का हो जाता है, अब उनका $1 मतलब एक कॉइन $1 का, उनके पास कितने पड़े हैं? 10,000, 20,000, तो उनका कितना हो गया? $10,000, $20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, ऐसे उनके हो गए प्रॉफिट। जैसे ही उनको दिख गया कि मार्केट $1 पे आ गया, वो सब क्या करते हैं? सेल 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 करना चालू, पूरी मार्केट वापस गिर जाती है। तो ज्यादा लालच नहीं करनी, इन्वेस्ट करना है, $1 का वेट करना है, $1 हो गया, निकल जाना है मार्केट से। उसको 2 या 3 बनने का वेट मत करो, क्योंकि बाकी के लोग नहीं करेंगे वेट। तुम वेट करोगे तो तुम फंस जाओगे, बाकी के लोग वेट नहीं करेंगे। बाकी के लोग $1 देखते सही सारा प्रॉफिट अपना निकाल लेंगे, क्योंकि खरीदा उन्होंने इतने प्राइस पे है और बेच वो इतने प्राइस पे रह रहे। जैसे मैंने अभी दिखाया कि अगर मैंने वो वाला कॉइन, 50,000 कॉइन मैंने खरीदा, 50,000 के लिए मेरे को कितना चाहिए? 1300 USDT, पर वो बन कितना रहा है $1 बनने के बाद? 48,000। 1,000 बन जा रहा है 40,000। प्रॉफिट देख रहे हो? तो 1 लाख बन जा रहा है तुम्हारा 40 लाख, ये प्रॉफिट है। और ऐसे सिर्फ यही कॉइन नहीं है जो मैंने बताया, ये रोज अपडेट होता है, ठीक है? ये जो प्लेटफॉर्म है 52 वीक का, ये रोज नए नए कॉइन दिखाता है। आज ये दिखा रहा है 16 कॉइन, कभी तुम देखोगे यहाँ पे 20 कॉइन है, कभी 25 है, कभी 30 है, कभी 40 है, या कभी 10 ही है। तो ये रोज फिल्टर आउट करता है, रोज। तो हमें रोज उस एक कॉइन की तलाश में रहना है जिसका परफॉर्मेंस एकदम पीक पे है, कि एकदम 1,000% बढ़ जा रहा है, 2,000% बढ़ जा रहा है। कोई कोई कॉइन तुम देखोगे जो 10-10 हजार% भी ऊपर चले गए। हमें बस उन्हीं कॉइन पे फोकस करना है। रोज यहाँ पे फिल्टर में रोज, एवरी डे ये चेंज होता है, एवरी डे कुछ नए 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 कॉइन यहाँ पे आते हैं। यही ढूंढते रहना है। वो जो बोलते हैं यार हमें पता ही नहीं कौन सा कॉइन बढ़ रहा है, कौन सा कॉइन ऊपर चले जा रहा है, ये वो फिल्टर है जहाँ से तुम पता कर सकते हो कि कौन सा कॉइन अच्छा चल रहा है, कौन सा कॉइन बुरा चल रहा है, कौन सा कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, कौन सा नहीं देगा। ये सारी चीजें तुम यहाँ 52 वीक हाई से ले सकते हो। समझ में आ गया स्ट्रैटेजी? अच्छी लगी स्ट्रैटेजी, या कोई डाउट है स्ट्रैटेजी में तो मैं अभी क्लियर भी कर देता हूँ, कि कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, स्ट्रैटेजी कैसी है, छोटे पैसे से बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं, ये वही स्ट्रैटेजी। जैसे वो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जिनके पास में बहुत हजार हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार बिटकॉइन है, अब कैसे आए? तुमको लगता है सही में उन्होंने अभी खरीदे होंगे करके? नहीं, बहुत पहले खरीद के रखे हुए हैं। पहले के जब बिटकॉइन कितना था, $10, $5, $6, उस टाइम पे खरीदे रखे हैं बड़े क्वांटिटी में। आज बेच रहे हैं जब बिटकॉइन 1 लाख, एक 100K, $1 लाख का बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन $1 लाख का, उस टाइम पे बेचते हैं। सेम टेक्निक में यहाँ पे यूज करता हूँ छोटे कॉइन्स में। सेम टेक्निक, कि सस्ते में खरीदना है जहां पे $1 भी नहीं है, और जब भी $1 होता है बेच देना है, क्योंकि मैं क्वांटिटी खरीद रहा हूँ वैसे 10,000 कॉइन,
20,000 कॉइन ऐसी। अच्छी लगी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी। यूजर 553911 एंड यूजर 553138। अच्छी लगी स्ट्रैटेजी, बुरी लगी स्ट्रैटेजी, कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी? प्लीज जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। या फिर कोई डाउट है स्ट्रैटेजी को लेके तो वो भी पूछो, मैं अभी यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कोई कंफ्यूजन होगा फिर तुम्हें लॉस होगा, तो फिर उससे अच्छा है यहीं पे डाउट क्लियर कर लो, बेस्ट है। Welcome user 574711 on the live stream of zip.com. Thank you so much for joining. Thank you so much for being a part. So, बताओ भाई। अच्छी लगी स्ट्रैटेजी, बुरी लगी स्ट्रैटेजी, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, कुछ चीजें और समझ ही नहीं आई, तो जरूर कमेंट पे बताओ, मैं अभी सॉल्व करूँ। User 553911, how did you like the strategy? Are you satisfied? Are you having doubt? Anything? Do share. इसको भाई कैसे करना है? किसको कैसे करना है? किस चीज को क्या करना है? थोड़ा समझाओ मुझे, मैं समझ ही नहीं पाया। इसको कैसे करना है? ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है? थोड़ा डाउट बताओ अपना, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। इसको भाई कैसे करना है, मतलब इसको किसको क्या करना है? स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, फिर से बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाते हैं। हमें भागते हुए घोड़े पे ही पैसा लगाना है। अब भागता हुआ घोड़ा मतलब क्या है? जो जीत रहा है, जो पैसे कमा रहा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि भागता हुआ घोड़ा कहाँ मिलता है? 52 वीक हाई पे। 52 वीक हाई एक ऐसा फिल्टर है जहां पे एक साल के अंदर ऐसे कॉइन जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कि टू टू करेंसी
किटू करेंसी मतलब क्या है? किटू टू करेंसी मतलब मैं समझा नहीं। किटू टू करेंसी क्या होता है? किट्टू क्या होता है? पहले तो यही बता दो मेरे को। कि किटू क्या होता है? KITTU, ये कोई करेंसी है क्या? किटी है। ये बोल रहे हो क्या, ये किटी? ये किटी बोल रहे हो क्या? ये रोरिंग किटी? किटू क्या होता है? KITTU क्या होता है? यूजर 553911। पहले तो नाम ही बता दो। नाम बताया क्या पहले? मैं भूल गया शायद, एक समय देख लेता हूँ। यूजर 55 ने पहले कभी बताया है क्या? नहीं। तो यूजर पहले, यूजर 553911, पहले तो नाम ही बता दो यार। प्लीज टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी व्हाट ये कीटू क्या होता है? कीटू, KITTU क्या होता है? ये कोई करेंसी है क्या? कीटू टू करेंसी मतलब क्या? कीटू टू करेंसी क्या होता है? कीटू टू करेंसी, कीटू टू करेंसी, थोड़ा समझाओ मुझे प्लीज। ये किट्टू क्या है? क्या है ये किट्टू? कौन है ये किट्टू? कहाँ से आया है ये किट्टू? प्लीज टेल मी, ये किट्टू क्या है? राहुल, यस। राहुल जी, ये किट्टू क्या है? KITTU, KITTU टू करेंसी। टू करेंसी तो समझ में आ गया, उसको करेंसी में, पर ये KITTU, ये जो ये यहाँ पे ये है, हेलो किटी है क्या ये? ऐसा कोई कॉइन है कि क्या है? क्या है ये किट्टू? कौन है ये किट्टू? इंडियन? इंडियन? किट्टू इंडियन है? ठीक है, किट्टू इंडियन है। किट्टू इंडियन है, ठीक है। किट्टू इंडियन होने के बाद में क्या? राहुल जी, हम सेंटेंस में बात करते हैं, हम सेंटेंस में। नो, किट्टू टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक, ओके, किट्टू इज टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, किट्टू कोई इंसान नहीं है, किट्टू की करेंसी नहीं है। INR टू करें तो वो है क्या? मतलब पूछ क्या रही है? इंडियन, अब तुमने इंडियन भी बोला है राहुल जी, अब तुमने बोला इंडियन, मुझे पता है तुम इंडियन हो। राहुल एक इंडियन का ही नाम हो सकता है। जानना क्या चाहते हो? राहुल जी, राहुल नाम तो सुना ही होगा। आखिर क्यों पल भर में दीवाना में हो गया। बताओ राहुल जी, तुम बताना क्या चाहते थे? क्या बोलना चाहते हो? बता ही दो यार। अब हमसे क्या शर्माना। राहुल दीवार। यस। राहुल जी, क्या पूछ रहे हो? क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम्हारा डाउट है? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? बता ही दो।
जल्दी ही बता दो। रहा नहीं जाता अभी। अरे बोल भी दो यार राहुल जी। क्या हो गया? आपने जो आपने जो बाय की है उसको थोड़ा बता सकते हो कैसे बाय की है? सबसे पहले हम 52 के खाई में जाएंगे। ये मैं कैसे बाय करता हूँ, क्यों करता हूँ ये सब बाय में, क्यों करता हूँ ये हरकतें में, ये बाय बाय खरीदने वरीदने की हरकतें क्यों करता हूँ मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले जाएंगे 52 वीक हाई में। ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म मिलता है आपको। ट्रेडिंग व्यू में सारे दुनिया के सारे कॉइन, दुनिया के सारे मार्केट आप एक जगह पे देख सकते हो। तो मुझे ये देखना है तो है सबसे पहले कि कौन सा कॉइन बढ़ रहा है, कौन सा कॉइन नीचे जा रहा है, कौन से कॉइन में मैं पैसा लगा सकता हूँ, कौन से कॉइन में मैं जल्दी पैसे कमा सकता हूँ और कौन से कॉइन में मेरे को नुकसान हो सकता है। कोयल को कैसे बाय करे? अब ये कोयल कौन है? ये कोयल कौन है अभी? KOYL। अब ये कोई कॉइन है क्या कोयल? एक सेकंड। ऐसा तो है ही नहीं नाम। राहुल जी, सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। एक सांस लो, दो सांस लो, ठंडे दिमाग से सोचो। क्या बोलना चाहते, क्या टाइप करना चाहते? टाइप भी ऐसे ऐसे नहीं करना। एक टाइम पे एक शब्द ढूंढो तुम पहले। तुम्हें कौन सा शब्द ढूंढना है, तुम वो शब्द ऐसे 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 करके टाइप करो, फिर ही रिप्लाई करो। अभी कोयल कौन है मैं जानना चाहता हूँ। ये कहाँ है ये कोयल? ये कोयल अबे तो, और ये कोयल तुम्हें बाय करनी क्यों है? कोयल लड़की है तो तुम बाय नहीं कर सकते हो कोयल। कोयल चिड़िया करना चाहते हो तो ठीक है, तुम कोयल चिड़िया बाय कर सकते हो। पर ये कोयल अगर तुम लड़की बाय कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। लड़कियां लड़कियां खरीदना अच्छी बात नहीं है। कोयल कैसे बाय करे? अब ये कोयल कौन है भाई? राहुल भाई, कोयल कौन है? बता। कौन है ये कोयल? फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। पहले तुमको किट्टू चाहिए थी, किट्टू टू करेंसी, किट्टू। पहले तुम किट्टू खरीदना चाहते थे, अब तुम कोयल खरीदना चाहते हो। तुम पहले किट्टू खरीद रहे थे, अब तुम कोयल खरीदना चाहते हो। तुम के पर के नाम से ही चाहिए तुम्हें, हाँ? ये मैं देख रहा हूँ एक चीज, के नाम की ही चाहिए तुम्हें। ये के नाम की ही क्यों चाहिए तुम्हें? नॉट कोयल, सॉरी, फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुई। मैं वो समझ गया, मैं तो स्टार्टिंग में ही जैसे वो कोयल पढ़ा मैं तभी समझ गया था कि कोयल तो खरीद ही नहीं सकते। तुम ये टाइपिंग मिस्टेक किस चीज का कर रहे हो वो भी तो एक्सप्लेन कर दो ना, कि ये कोयल के जगह पे क्या बोलना चाह रहे थे। कोयल किस चीज की टाइपिंग मिस्टेक है? वो ये बता दो कि के से कुछ तो है। के से कुछ तो है जो तुम बताना चाहते हो, पर तुम बता नहीं पा रहे हो के से क्या बताना चाहते हो। गूगल पे जाके टाइप कर लो, शायद तो उसका सही स्पेलिंग मिल जाएगी। तुम्हारा ना स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है। पर मैं नहीं काटूंगा स्पेलिंग की मिस्टेक की, एक मार्क नहीं कटते यहाँ पे। कोई बात नहीं, पर तुम जाओ गूगल पे एक बार जाके ना सही स्पेलिंग से टाइप करो, तभी मैं समझ पाऊंगा असली में ये
चाहता क्या है, मतलब क्या चाहिए? राहुल जी क्या चाहिए? स्पेलिंग मिस्टेक, कोयल की जगह पे क्या बोलना चाह रहे थे? कोयल नहीं तो क्या, फिर कोयल नहीं तो क्या? कोयल बाय कैसे करे? अगर कोयल बाय नहीं करनी है तो क्या बाय करना है फिर? कोयल की जगह पे क्या हो सकता? कुकू कॉइन, देयर इज नो कुकू कॉइन। को के से कोई कॉइन, के से कितने कॉइन है यहाँ? देखते हैं। के से तो बहुत ज्यादा है यार। अब उसमें कोयल, काजल, ये है क्या? काया, केसन, कीपर, बता दो यार राहुल भाई, इतना सस्पेंस में थोड़ी छोड़ते हैं यार, मतलब किसी को, मतलब ठीक है यार, आपको पता है तो बता दो। अब मैं, मेरे को सस्पेंस हो गया कि अब ऐसा क्या है ये, पहले किट्टू था फिर कोयल बना, फिर अभी बता ही दो, अभी सस्पेंस तोड़ी दो कि तुम बताना क्या चाहते थे। राहुल जी बता ही दो यार, क्या है उस दिल के अंदर? क्या है तेरे दिल के अंदर? बता ही दो। किट्टू है, कोयल है, दिल में क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। कोयल, किट्टू, ये टाइपिंग मिस्टेक किस चीज की थी? बता दो प्लीज, जानना चाहता हूं मैं। तभी मैं मदद कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे मदद करूं आपकी? अब एक मौका तो दो मदद करने का। राहुल जी, सांस लो और बताओ, बता ही दो। कब से पूछ रहा हूँ, एक बार बता दो बस। एक तो आप लाइव स्ट्रीम पे भी हो, ऐसा भी नहीं कि लाइव स्ट्रीम से आप चले गए हो कहीं पे हो कुछ कर रहे हो, नहीं। आप लाइव स्ट्रीम पे ही बैठे हो, मैं देख पा रहा हूँ, आप 30 मिनट से लाइव स्ट्रीम में हो। आपको मदद चाहिए जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप कमेंट भी कर रहे हो, आपको मदद चाहिए, कुछ तो आपको पूछना है पर आप पूछ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हो और मैं मदद कैसे कर सकता हूँ इस चीज में। कॉइन यार, कॉइन, 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 कॉइन कैसे बाय करे? आह, आह, राहुल यार, इतना बड़ा सस्पेंस, किट्टू, फिर कोयल, एकदम से फिर वो कॉइन हो गया यार। कॉइन अपने जीबिट पे बाय करो, और क्या बोलूं मैं, कहाँ बाय करना है कॉइन? कॉइन हमेशा ऑब्वियसली आप जीबिट बाय करेंगे। जीबिट पे ये अपन गए, यहाँ जीबिट पे, ये मेरा लॉगिन है कि अभी चले गया? है लॉगिन है, ठीक है। ये जीबिट पे जाएगी, जीबिट पे अगर अगर वो कॉइन नहीं है जीबिट पे, बट अगर जीबिट पे है वो कॉइन, तो ये स्पॉट पे बाय करना है हमें। मैंने जो वो टेक्निक बताई है, स्ट्रैटेजी बताई है, वो वो स्पॉट की स्ट्रैटेजी है, स्पॉट मार्केट की। यहाँ पे जाके वो वाला अगर कॉइन यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉइन है ऑलरेडी, ठीक है। अगर उसमें से वो कॉइन है तो ठीक है, अगर उसमें से वो कॉइन नहीं है तो कहीं और से कर लो वो बाय। पैसा आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास वो कॉइन अवेलेबल नहीं है, कर लो बाय, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और बाय के लिए तो तुमको पता ही है, अपना प्राइस डालना है और क्वांटिटी। यहाँ पे जो भी, फॉर एग्जांपल चल ठीक है, एक मैंने यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ,
अभी समझ लो, ये यहाँ पे एक कॉइन ढूंढने दो, ये एल्गो एल्गो कॉइन कितना है, 0 पॉइंट वाला है। मैंने क्या बोला कि ऐसी कॉइन ढूंढना है जो $1 के नीचे है, क्वांटिटी अच्छी बाय करनी है। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये उसका प्राइस है, मैंने डाल दिया। मेरे को कितने कॉइन चाहिए इसमें, मेरे को चाहिए ऑलमोस्ट पकड़ लो 20,000 कॉइन चाहिए मुझे। तो 20,000 कॉइन का कितना होता है टोटल, 3,000। अच्छा, 3,000 यूएसडी होता है 20,000 का, कम करेंगे 300 यूएसडी। उतने छोटे मोटे कॉइन बाय कर लो। अभी ये तो 0.1 है, बहुत क्लोज है $1 बनने के। हमने जो ढूंढा था वो 0.00 में था। तो ऐसे कोई कॉइन में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे क्वांटिटी डालो, बाय करो, खत्म, और रखे रहने दो। 1-2 साल तक वेट करो, 1 साल मैक्स, 1 साल मेरे को लगता है 1 साल में हो जाता है। 1 साल तक वेट करना है, 1 साल में इसी कॉइन दिख गया कि ये 0.0 से 0.9 तक आ गया, $1 बन गया, उसी टाइम पे सेल कर दो, खत्म बात। बाय का सबके यहाँ पे मतलब स्पॉट का बाय तो बहुत सिंपल सा ही है ना, मार्केट के प्राइस पे गए, क्वांटिटी डाली और बाय कर ली। कितने चाहिए मेरे को 20,000 एल्गो चाहिए, 50,000 एल्गो चाहिए, कितना एलगी चाहिए, वो बस क्वांटिटी डाली, बाय कर लिया, खत्म बात। अभी वो वाले जो कॉइन मैंने जो बताया कि वो 52 वीक हाई है, अभी जैसे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे गए अपन, ठीक है, मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरे को होम में जाना है। अभी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे अगर वो वाले कॉइन नहीं है, जैसे मैंने बताया क्रिप्टो में, कहाँ है वो 52 वीक लो सप्लाई मुझे, ओवरव्यू। हाँ, अभी 52 वीक हाई वाले अगर वो वाले कॉइन मतलब, जैसे वो क्या है, ये वाले नए 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 कॉइन है, ये बहुत नए नए कॉइन आते हैं ना मार्केट में, अगर ये वाले नहीं है उसमें, जिबिट में, तो कोई और प्लेटफॉर्म भी तो होते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, प्लेटफॉर्म नहीं, पैसा कमाओ यार, बस। ये वाले कॉइन इसमें ढूंढ लो कि ये कहाँ अवेलेबल है, अवेलेबल ढूंढने के लिए भी मैं बता देता हूँ, चैट जीपीटी से पूछ लो कि कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया CONDORDUIM, चैट जीपीटी को पूछो। आ गया चैट, विच प्लेटफॉर्म, CONDOR, क्या स्पेलिंग थी उसकी, DI, वो सर्च करेगा और वो बता देगा कौन से एक्सचेंज में अवेलेबल है। नहीं नहीं, क्या बोल रहा है ये? हाँ, ऑन मेजर देख, क्रैकन में भी है, और एमएक्स ग्लोबल में भी है, गेट आईओ में भी है, कुकॉइन में भी है, और 2-3 ऐसे कॉइन है। तो उसमें आपको प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, मतलब कि वो वाली जो कॉइन मैंने, जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताया मैंने, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान का जो कॉइन है वो सीबीट पे नहीं है, तो आप सीधा चैट जीपीटी को पूछो कि कहाँ पे अवेलेबल है, उधर जाके बाय कर लो, खत्म। मैंने एग्जांपल दिया इसका, जरूरी नहीं है कि यही बाय करना है, ठीक है। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है बस वही बाय करेंगे अपन। इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा ही है वैसे, 13 से 30, 30 से 90, 90 से 400, 400 से 600 हो गया है ये, ठीक है। आ गया 600 से 800, फिर थोड़ा माइनस माइनस में हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाय इसका दिया है, इसका बस बाय दिया है, और स्ट्रॉन्ग बाय एमए रेटिंग में स्ट्रॉन्ग बाय है इसका भी, कॉन कोर डीएम का। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे सिग्नल भी मिलता है, टेक्निकल सिग्नल में स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब कि हाँ, मतलब ये परफॉर्मेंस क्या होता है ना बेसिकली, ये मैं परफॉर्मेंस में क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि 13% मार्केट ऊपर उठ गया, 30% उठ गया, 90% उठ गया, 400, 600, ये क्या है ये? इसका मतलब होता है कि उतने लोग पैसा डाल रहे हैं इसमें, जितने लोग पैसा डालेंगे उतना ये परसेंट ऊपर 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 उठते रहेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें कैसा वाला परसेंटेज देखना है, ऐसा वाला। 8,000% उड़ गया, 3,000% उड़ गया, तो मतलब कि बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं। जब बहुत सारे लोग एक कॉइन में पैसा डालेंगे तो वो कॉइन जल्दी बढ़ेगा, जल्दी $1 आएगा।
समझ में आ गई? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस उन्हीं कॉइन का देखो जो 3 डिजिट या 4 डिजिट के परफॉर्मेंस पे है। मतलब 100% बढ़ गई, 1000% बढ़ गई, 2000, 10,000 ऐसे, मतलब उसमें कैसा कि बहुत लोग हैं उसमें और सब लोग वेट उसी का कर रहे हैं कि कब $1 बन जाए और कब मेरा प्रॉफिट में लेके निकल जाऊं। जब ये अगर हम देखते हैं कि यार ये ऐसे वाले कॉइन होते हैं जहां पे नहीं, कहिए अभी बिट कैसल टोकन 9%, 9%, 9%, 9%, ऐसा नहीं कि बढ़ने रहा है, बढ़ रहा है बट बहुत धीरे। मे बी इसमें लग जाएंगे अपन को 2-3 साल तो लग जाएगी $1 बनने के लिए। हमें 2-3 साल का वेट नहीं करना है, हमें चाहिए ऐसे कॉइन जो 1 साल के अंदर रिटर्न दे दे हमें। समझ गए? इसलिए परफॉर्मेंस कौन सा देखनी है, ऐसे वाले 500, 1000% मार्केट ऊपर, 500%, 5000% मार्केट ऊपर, ये ऐसे वाले कॉइन हमें देखने। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा चीज है। ये वाले कॉइन भी बढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर टाइम ज्यादा लगेगा, हमें चाहिए क्विक। हमारे पास पेशेंस नहीं होता, हमारा पैसा जब लग गया था, तुम ही बता दो, तुमने अगर नहीं नहीं बोल के कुछ भी ले लिया, तुमने किसी भी चीज का ऑर्डर मार दिया ऑनलाइन पे, वेट रहता ना यार, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, बस वही। अब तुम इसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद में वेट नहीं हो पाता है, तो हमें ऐसे ही कॉइन में इन्वेस्ट करना है जिसमें इतना वेट ना करना पड़े। एक एक साल के अंदर, मतलब जो भी कॉइन परफॉर्मेंस करते हैं ना, 500% अप, 1000% अप, 5000, 6000, वो जल्दी 1 साल के अंदर $1 बन जाते हैं, प्रॉफिट निकाल के हम जा सकते हैं। ठीक है? कैसे करें बाय भी बता दिया, स्पॉट में बाय करना है, फ्यूचर में बाय नहीं करना है। फ्यूचर हमारे वो दिन के प्रॉफिट के लिए होता है फ्यूचर, कि मेरे को दिन में आज 100 USD चाहता हूँ मार्केट से, आज मैं 10 USD तो निकाल के ही रहूंगा, आज मैं 20-30 निकाल लूंगा, ये हो गया दिन की प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट, वो जो फ्यूचर से निकलती है। स्पॉट में जो प्रॉफिट निकलता है वो लॉन्ग टर्म का रहता है, कि इसको लगा के देखते हैं आगे में बहुत प्रॉफिट देगा, वो होती है स्पॉट प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म। फ्यूचर की होती है शॉर्ट टर्म, एक दिन का, एक हफ्ते का प्रॉफिट, 2 हफ्ते का प्रॉफिट, वैसे वाले प्रॉफिट। ठीक है? स्ट्रैटेजी समझ गई? अच्छी स्ट्रैटेजी है। अभी मैं लेना चाहता हूँ ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ मैं, यानी अमेंद्र बाहुबली। ब्रेक, ब्रेक, साइज 40 कर देते, ब्रेक, 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 ब्रेक। मैंने ऐसे सुना है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं 15 मिनट के ब्रेक पे जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये इतना बनाना पड़ता है, पता है? इतने बार मतलब दिख रहा है तुमको, 10 मिनट ब्रेक। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है। आई विल बी राइट बैक। अभी नहीं यूजर आ गया ना, इससे पहले। ठीक है, तब आई बी राइट बैक।
ठीक है, let's start the market analysis. Welcome user 553138 and 553911. Welcome on the live stream. अरे राहुल जी आप यहीं हो, एंड अनदर 553138. आप भी अपना नाम ही बता दो यार, आपको क्यों मैं यूजर नेम से बोलूं, आपको भी अपने नाम से ही बुलाता हूँ. तो अभी मार्केट एनालिसिस चालू करते हैं. मार्केट एनालिसिस में हम सारे मार्केट को देखेंगे, जहां पे भी एक परफेक्ट एंट्री मिल रही होगी. मैं तो मतलब मोस्टली ये वाले ट्रेड लेता हूँ मैं, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी. ये चारों की मार्केट एनालिसिस करेंगे. जहां पे भी एक अच्छी एंट्री मिल रही है वहां पे अपन एंटर करेंगे मार्केट के अंदर. मार्केट एनालिसिस चालू करते हैं. मार्केट एनालिसिस के लिए मैं करते करते सिखा भी देता हूँ कि मार्केट एनालिसिस करते कैसे. मार्केट एनालिसिस में हमें 2 से 3 चीजें देखनी है. मैं 2 से ज्यादा ही है, मतलब 4 से 5 चीजें हमें देखनी पड़ती है मार्केट एनालिसिस में. सबसे पहले तो मार्केट बैठा कहाँ हुआ है. क्या मार्केट सप्लाई जोन के पास है, क्या मार्केट डिमांड जोन के पास है, कहीं कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है. फेयर वैल्यू गैप बन रहा है मतलब एक बड़ा इंसान, एक बड़ा प्लेयर इस टाइम पे, इस मोमेंट पे मार्केट में अवेलेबल है. उसकी मदद से हम अपना प्रॉफिट बहुत कमा सकते हैं. क्योंकि एक होता है कि मूवमेंट जो देता है एक क्रिप्टो करेंसी में, जब भी एक मूवमेंट मिलता है हमें, एक अच्छा वाला, एक मतलब एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा मूवमेंट, 2% का, 3%, 4%, एक बड़ा एक जो मूवमेंट मिलता है वो हमेशा जब ये बड़े लोग अपना बड़ा पैसा डालते हैं तभी मिलता है. तो हमेशा चेक करना है कि फेयर वैल्यू गैप से क्या होता है ना. फेयर वैल्यू गैप से हमें एक चीज पता चलती है कि यार कोई बड़ा इंसान इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, जो एक बड़ा पैसा डालेगा, बड़ा मूवमेंट मिलेगा, वो बड़ा मूवमेंट हमें कैप्चर करना है. ये होगी तीसरी चीज. चौथी चीज हमें देखनी कि यार कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या. क्योंकि हमने एक चीज रिपीटेडली देखी है कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, एक बड़ा मूवमेंट देखने मिलता है. जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है. अभी कुछ दिन पहले, ये कब है, 3 को, शायद तक 3 तारीख को या 4 दिन पहले मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला था, जो ये डाउनफॉल का था. अभी हम अगर स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें तो जब मार्केट गिरती है तो नुकसान होता है हमें. पर एक दूसरी मूवमेंट भी होती है कि हमें एक अच्छा बहुत लो पॉइंट पे बाय करने का भी एक ऑप्शन मिलता है. पर ये स्पॉट की बात होगी. फ्यूचर में ऐसा नहीं. फ्यूचर में मार्केट चाहे गिर रही हो या चाहे उठ रही हो, चाहे वो बहुत नीचे नीचे गिर रही हो या फिर चाहे वो बहुत ऊपर ऊपर जा रही हो, हम दोनों साइड से प्रॉफिट ले सकते हैं. ठीक है, हमें बस ऑर्डर प्लेस करना है उस पोजीशन का. अगर गिर रही है तो सेल का पोजीशन में एंटर करना है, जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं फ्यूचर टर्म में. फ्यूचर में हम, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग है, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है. ये अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग है. अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ये ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट होता है. इसका मतलब क्या होता है कि एक होती है ओपन लॉन्ग की, जिसमें हम करते हैं बाय. लॉन्ग फ्यूचर में हो गया बाय, और ओपन शॉर्ट बोले तो शॉर्ट हो गया सेल. इसमें हम बाय सेल यूज कर सकते थे, पर जिन्होंने कर दिया है, जिन्होंने नाम दे दिया है, वो नामकरण हो चुके हैं ऑलरेडी. तो लॉन्ग फ्यूचर में होता है बाय और शॉर्ट फ्यूचर में होता है सेल. ठीक है, तो हम करेंगे ओपन बाय या फिर ओपन सेल. फ्यूचर में हम दोनों साइड से प्रॉफिट कमा सकते हैं. चाहे मार्केट गिर रही हो तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, मार्केट उठ रही हो तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि यार मार्केट आज गिर रही है आज तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, मार्केट आज गिर रही है आज तो मेरे को कुछ लॉस ही लॉस हो रहा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. फ्यूचर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है. फ्यूचर मार्केट में चाहे मार्केट गिर रही हो या उठ रही हो, हमें प्रॉफिट जरूर जरूर मिलेगा. ठीक है, तो हम आज वही चेक करेंगे. तो मैं कुछ एक चार्ट पैटर्न होता कैसा है, थोड़ा उसका एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आपको भी एक आइडिया रहना चाहिए कि ये चार्ट पैटर्न ढूंढते कैसे. ठीक है, सबसे पहले चार्ट पैटर्न बहुत प्रकार के होते हैं. कंटिन्यूस भी होता है और रिवर्सल भी होता है. अभी कंटिन्यूस रिवर्सल, ये क्या मैं बकबक कर रहा हूँ, ये क्या होता है कंटिन्यूस, ये क्या होता है रिवर्सल, मैं समझा. मैं हूं ना यहाँ पे, मैं ही समझाऊंगा, और कौन समझाएगा. कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होता है जो ट्रेंड कंटिन्यू करता है अपना. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस. अभी ट्रेंड कंटिन्यू मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल समझो कि मार्केट गिर रही है, यहाँ पे उसने अपने एक चार्ट पैटर्न बना दिया. चार्ट पैटर्न
कौन सा होता है मैं वो भी समझा दूंगा, क्योंकि एक नहीं है, चार्ट पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, एक नहीं होते। ठीक है, अब उसके बाद में ये पहले मार्केट मेरी गिर रही थी, उसने चार्ट पैटर्न बना दिया। अब ये कंटिन्यू है, मतलब क्या, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। पहले ट्रेंड क्या था, मार्केट नीचे गिर रही है। अब दूसरा ट्रेंड क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर कंटिन्यू कर रहा है मतलब गिर रहा है तो फिर से गिरेगा ही, तो ये वापस गिरने लग जाएगा। ये बोलते हैं हमारा कंटिन्यूस। इसका सेम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट उठ रही है, ठीक है, मार्केट को हो रहा है अप मूवमेंट, उसके बाद उसने यहाँ पे अपना एक चार्ट पैटर्न बना दिया, कोई भी चार्ट पैटर्न, क्योंकि बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस ये क्या है, कंटिन्यूस। ट्रेंड क्या था, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर उसने चार्ट पैटर्न बनाया तो यहां से वापस से एक मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऊपर जा रही है तो फिर से ऊपर जाएगी, नीचे गिर रही है तो फिर से नीचे गिरेगी। ये होता है हमारा कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। रिवर्सल होता है इसी का अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, कि ट्रेंड रिवर्स कर देगा, अब वो बदल देगा ट्रेंड। जैसे ये हो गया रिवर्सल। अब इसमें कैसा है कि पहले क्या हो रहा है, पहले मार्केट हो रही है, गिर रही है, एग्जांपल लेते हैं, मार्केट पहले गिर रही है, उसने यहां पे चार्ट पैटर्न बना दिया, अब रिवर्स, पहले गिर रही थी, अब उसका अगर मैं उल्टा करूं तो क्या हो रहा है, अभी मार्केट उठ रही है, सिंपल, अब यहां से उठेगी मार्केट। फिर अगर उसका अपोजिट ले लो कि पहले उठ रही थी मार्केट, यहाँ पे मेरा चार्ट पैटर्न बना और यहां से क्या हो रही है, गिर रही है मार्केट। अब चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है, चार्ट पैटर्न क्या करता है, अभी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मार्केट को रीड करना नहीं आता, कि यार अभी मैं बाय करूं कि सेल करूं, मेरे को प्रॉफिट बाय में मिलेगा क्या फिर मेरे को प्रॉफिट सेल में मिलेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे समझू कि इस टाइम पे इस मोमेंट पे मेरे को क्या करना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न बहुत इजी कर देता है समझने। अभी मैं एग्जांपल देता हूं एक, अभी ये यहां पे एक चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब वो चार्ट पैटर्न का मूवमेंट कैसे कैप्चर करते हैं, उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, उसका प्रॉफिट उसका प्रॉफिट कैसे बनाते हैं और उसका प्रॉफिट लेते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं समझा, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब वो कौन सा चार्ट पैटर्न है, कैसा है, मैं सारी चीज बताता हूँ, ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज में बात करेंगे। चार्ट पैटर्न ढूंढने के लिए ना, सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न होते क्या, इसका जानना, थोड़ा नॉलेज रहना जरूरी है। जो अगर आप चाहो तो गूगल पे भी देख सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं लाइव स्ट्रीम पे भी समझा सकता हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं आपको यूट्यूब अकाउंट भी दे सकता हूँ जिसपे आपको सारे चार्ट पैटर्न कौन से प्रकार के हैं, कितने हैं, क्या करते हैं, वो सब का भी मैं बता सकता हूँ इसी लाइव स्ट्रीम। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि चार्ट पैटर्न इस्तेमाल, ढूंढते इस्तेमाल और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को ये चार्ट पैटर्न पता है इसलिए मैं इजीली ड्रॉ कर लूंगा। तुम्हें अगर ये चार्ट पैटर्न नहीं पता तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ जाएंगे ड्रॉ करने कि करना कहाँ है ड्रॉ। अभी मैंने ये दो चीजें की, मैंने दो चीजें क्या किया है इसमें, ठीक है। सबसे पहले मार्केट हो रही थी, गिर रही थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने हल्का सा बहुत छोटा रिजेक्शन लिया और उसके बाद वापस से गिरने लगी। अभी गिरते 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 उसने एक पैटर्न बनाना चालू किया जो मेरे नोटिस में आ गया। मेरे नोटिस में क्या आया मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरे नोटिस में क्या आया कि यार मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन क्या होता है, बेसिकली एक ट्रेंड लाइन एक लाइन है। अगर उस लाइन पे बार बार आके मार्केट सेम सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये हो रही है मेरी मार्केट, गिर रही है, यहां आके फिर ऊपर चली गई, फिर गिर रही है, यहां आके फिर ऊपर चली गई, फिर गिर रही है, और यहां आके फिर ऊपर चली गई। अब ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, कि मतलब एक पोजीशन पे मार्केट 10 बार आके सपोर्ट ले रहा है, यहां से नीचे नहीं गिर रही है, इसके बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और एग्जैक्टली उल्टा इसका अगर बोला जाए तो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, अगर समझ लो ये मेरी लाइन हो गई, मार्केट आ रही है ऊपर ऊपर ऊपर, इसको क्लिक कर रही है, फिर नीचे गिर जा रही है, फिर आती है ऊपर ऊपर ऊपर, इसको क्लिक कर रही है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर आ रही है ऊपर ऊपर, इसको क्लिक कर दे, फिर नीचे गिर जाती है। तो क्या हो रहा है कि एक मार्केट को ना एक रेजिस्टेंस मिला है, कि मतलब इसके ऊपर वो नहीं जा पा रही,
जब जब ये लाइन पे, ये पॉइंट, अभी लाइन लाइन नहीं होती, हमारी इमेजिनेशन होती है कि हमने एक लाइन बना दी है उसे, एक जोन होता है एक प्राइस रेंज के आसपास, कि जब जब मार्केट इसके पास आ रही है, सेलर्स मतलब जो बेचने वाले हैं वो ज्यादा आ जाते हैं मार्केट में और वो बेचना चालू कर देंगे, बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे। ठीक है, ये चीज होती है। रेजिस्टेंस मतलब कि जहां पे सेलर आ जाता है और बेचना चालू करता है। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे बायर्स आ जाते हैं और खरीदना चालू कर देते हैं। ठीक है, अभी हम ये दो चीजें मैंने आपको समझे, अब ये दो ही चीज मैं यहां पे मार्केट में प्लॉट करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं, थोड़ा ना आपको अच्छे से दिखे, मैं वैसा जूम कर लेता हूं। ठीक, अभी ये मैंने बनाई अपनी ट्रेंड लाइन, ये मार्केट नहीं है, यहाँ पे पहला सपोर्ट। अब मेरे को एक चीज दिख रही है कि अगर मैं ऐसा ये ड्रॉ करूं तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने यही ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और चौथी बार सपोर्ट लिया। मतलब ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। इस ट्रेंड लाइन पे जब जब मार्केट आ रहा है तब तब वो मार्केट ऊपर उठ जा रही है। समझ में आ गई ये बात? अभी आपको मैंने एग्जांपल कैसे दिया कि ट्रेंड लाइन ऐसी है करके, जरूरी नहीं है, अब वो तो लाइन है ना, लाइन चाहे वो ऐसी रहे, ऐसी रहे, ऐसी रहे, या फिर कैसी भी रहे, लाइन लाइन होती है। ठीक है, अब उस लाइन पे जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, अभी मैंने क्या किया, बस एक पॉइंट से एक पॉइंट पे कितने पॉइंट मैंने मैच किए, ये एक, दो, तीन और ये चार, चार बार मार्केट में उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर उठी। ये हो गया क्या मेरा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहां से मार्केट ने गिरना चालू किया, अभी मैं ये देख रहा हूं कि इसको अगर लाइन को मैं ऐसा बनाते जाऊं तो मुझे एक चीज नोटिस कर रही है कि मार्केट बहुत सिमिलर रेजिस्टेंस ले रही है, गिर रही है मार्केट बहुत सिमिलर पॉइंट से, वही लाइन से, ये लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ किया, उसी लाइन से यहाँ पे भी मतलब कहीं पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया और यहाँ से तो मार्केट गिरना ही चालू होगी सी। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरा ट्रायंगल। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से लेके यहां तक का मैं हल्का ये बना। ठीक है, ये हो गया मेरा पोल कि इतनी तो मार्केट पहले गिरी थी, फुल मार्केट पहले इतनी गिरी, एक पैटर्न बनाया, ये होता है पैटर्न, ये है पैटर्न, ये पैटर्न बनाया उसने, और उसके बाद एकदम से बहुत अच्छा सेल मूवमेंट देखने मिला हमें। ये कितना मूवमेंट था, ये कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ हमारा, नहीं नहीं बोल के अगर मैं यहां से देखूँ, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ, नीचे आई मार्केट, यहां से लेके तो यहां तक 6.90, 6%, मतलब 6.9 बोलते 7% मार्केट गिर गई नीचे। 7% मार्केट कैप्चर करना मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं हम। अभी ये, इसको चार्ट पैटर्न का नाम भी है, ढूंढते कैसा है, ढूंढते कैसा तो बता दिया मैंने, इसको मैं दिखाता हूं गूगल पे कि ये होता कैसा है। इसे हम बोलते हैं बेरिश। बेरिश क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रही है। बुलिश मतलब मार्केट उठ रही है, बेरिश मतलब मार्केट नीचे गिर रही है। समझ गया? अब फिर आता है पेनेंट, PENNANT, पेनेंट पैटर्न, ये दिख रहा है बेरिश पेनेंट पैटर्न, इस पे मैं क्लिक करता हूं, इमेजेस पे जाते हैं। इमेजेस पे जाने के बाद क्या पे दो चीजें दिख रही है कि एक होता है बुलिश पेनेंट कि मार्केट ऊपर गई, ये सब ट्रायंगल बनाया उसने और फिर यहां से ब्रेकआउट मिला, और ये होता है दूसरा जो अभी हमें अभी की मार्केट में दिख रही है कि ये मार्केट गिरी, ये उसने अपना ट्रायंगल बनाया, एक पैटर्न बनाया और फिर वहां से मार्केट गिर गई। ये हो गया ड्राइंग फॉर्म में। अब इसका मार्केट वर्जन दिखाता हूं मैं, एक सेकेंड मेरे को। आई एम बैक, गुड डे, हाय गुड डे, हेलो हेलो हेलो, 6168, हाय अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वेलकम वेलकम, अल्फ्रेड वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, आई एम बैक, थैंक यू so much for being back. Alfred, you have anything to ask me? You can ask me right now. I can tell you in everything. I can explain everything in English.
Okay, I'm really sorry. At that time, I was explaining in Hindi to the Indian people, but right now I'm available completely for you. So you can tell me if you want anything to know in English, anything which I was explaining before you couldn't get, any doubt you have or anything. Please to ask me, Alfred. I will help you with every scenario. I will talk with you. I will solve your doubts. I will solve everything, whatever you want to ask, and that too I will say it in English. Okay. Really sorry for that time. I was explaining to some other people, but again, yes. And welcome a lot of people. Welcome user 542472. Welcome user 553. Acha, Rahul, you are here only. And Alfred is also here. Lu 66 is also here. And user 553138. Yes. Everybody on this live stream, if you haven't deposited till now, there are two options on the live stream function. One is click on deposit, another one is take a trade. Right now, I'm doing a market analysis and I'm also showing you how important a chart pattern is for a market analysis. Okay, so this is some trading pictures. One trading picture, same moment, market fall, made one triangle pattern, and from there again it fall down. Again, I will show you more photos. See, market fall, similar. It is not something different. Same bearish pennant pattern formed in different. I am new and I have never traded before. Okay. Alfred, I am explaining you right now that market analysis. What do you mean by market analysis? Market analysis mean how to read this chart. We see graph. This is a graph for us. One side we have price movement, below side we have the day, time, and blah. Okay. In that, we have to find our entry. At what point shall I enter so that market can give me a good amount of profit, right? So for doing that, there are multiple things. One is finding demand zone. What do you mean by demand zone? Demand zone, I can explain you demand zone. I will explain you everything slowly. Let's go on 1 day time frame so that I can explain you demand zone. Okay. Demand zone is a zone, not a line, not a price, a zone, which tells us that at this moment a very heavy buying came. Means a person invested a very huge amount. Is that person you? Is that person me? No. We are a retail investor. What do you mean by retail investors? Retail investors are those people who has very less money to invest, like 1,000 USD, 2,000, 10,000, 50,000. That is a very less amount for a crypto market. Why? Because crypto market is sitting on trillions kind of market supplies. People invest in millions and billions. You have heard it. I have heard it. Now, those are the people who create what? Demand zones. I will explain you how and how to spot it also in the market. Okay. So, first thing, good investment means what? A very good buying. A good buying means what? Green candles. Huge, big green candles. Can you see huge green candles? Yes. I can spot a very good green candles over here. Very huge green candles means heavy buying has been done at this point. Okay. Now, this was the start and this is the end. In the start of the demand zone, we will see if there is any red candle. Can you see a red candle? Yes, we can see a red candle at that point. So what are we going to do? I hope you know a candle has four components: open, close, high and low, which is basically like this is a candle, this is a body, and we call it upper wick, lower wick. Understood? Now body has two components: open and close. If it's a green candle, open will be below, close will be above, representing what? Representing the price is moving above. For example, market opened at 50 rupees, 50 USDT and closed at 100. That means what? Price increased. That is representing in green candle. Got it? Now, upper wick, the last point of upper wick is called as H, highest point the market went. Lower wick last point is called as L,
lowest point the candle went, the lowest price. This is regarding green candle. Now if I talk about red candle, if this is a red candle, open, this is a body, upper wick, lower wick. Open will be above and close will be below, representing what? The price has fallen down. High and low will be same. Body changes. Open price, open and close position change in green and red candle, but rest of the thing remains the same. H and L, highest point, lowest point remains the same. Okay. Now, you understood body's component, candles component now. Like I said to you that this is a demand zone. Why? Because a lot of people went for buying at that moment. Okay. Now, in that situation, what are we going to do? We're going to make a rectangle. On what? On highest point and lowest point, H and L of the starting. See, why we focus on the red candle? This was the start of the buying, but before that there was one red candle. Why do we focus on red candle? Why? Because red candle represents that it was the last effort made by sellers. That was the last effort by sellers. After that, buyers took over the market. Okay. So what we're going to do is we're going to make a rectangle on this tool. When you come on this tool, and then you go to the rectangle. Can you see rectangle? Click on that rectangle, and we are going to put it on what? H and L. Okay, I will write H and L for you so that you can understand what do you mean by H. See, like I said, this is a body. Upper wick is called as H. The end point, end. This is the end point. I call it H. Little small. Okay. This is the highest point. That upper wick ending is the highest point, and this is the lowest point. I will call it L. Okay. Now, what I have to do is take a rectangle and point it at the H first, exactly at the H, pull it down to the L, and from there I have to drag this thing. Okay. Till where? Till our current market, where the current market is. Like this. Simple. Now, why demand zone is important? Because a lot of time what happened? See, first movement was this. Obviously, we couldn't enter at the first movement. Okay, totally fine. Can you see? Exactly. This is the zone made from previous point. This is zone made by 7th July. 7th July was the zone. Now the same zone which was made in 7th July, market came exactly at that moment, which is 31st August. 31st August. From that moment, again the market went. So we got another entry. This is our buy entry. Whenever a market comes to demand zone, that is a buy entry for us. We will buy at that moment. 31st August it came. Again it came down. This is 26 September. On 26 September, again we got, again our market came to same zone which was made on what? July 7. Same thing happened, came 26 September, it came, and from there again we got a very good buy movement. Very good buy movement. Till what percent market went up? Market went almost 14.54%. 14% market went up. Okay. After that, okay, this happened on what? September, 26 September. Again, in here we got a small thing. Okay. A demand zone which was made on 7th July got us an entry on 31st and 26 September. By doing what? By just finding a demand zone in the market. Got it? This is market analysis. That we are finding first component. There are lots of component in the market analysis. First component is finding demand zone. So that we know one thing, that whenever a market comes to that zone,
we know that we have to go for buy. But there is a but on it. A demand zone might be used one time, two time, max three time. Not all the time market will come there and it will go. Like for example, this point, market again came, but did it went up very little and fall down of the market. Demand zone says that yes, there is a chance that market will grow up very quickly from that zone, but not commitment. It might be used once, twice, or thrice, not more than that. Okay, cool. This is demand zone. Now let's talk about supply zone. This was a demand. Demand always should be drawn in green so that we know we have to go for buy. Okay. Now let's talk about a supply zone. What do you mean by supply zone? Supply zone is basically from that point, a lot of heavy sellers will enter, which will make the market fall down. Exactly opposite of the demand. Demand made what? Demand made the market go up. Supply will make the market fall down. Let's go in 1 hour, 1 second. But however, I was explaining the chart pattern. Let me finish the chart pattern and I will explain you supply demand zone. Okay. So this was the chart pattern which we saw. Because I was explaining you this and I left it out in the middle. I don't want to leave it in the middle. I will come back again to the demand, supply, fair value of everything, how to do market analysis. But I was talking about the chart pattern which I forgot and now I remembered. So I will talk about this. Okay. We spotted it. You can clearly see the bearish pennant chart pattern. There are lots of chart pattern like this. It's not just one. There are lot and lot and lot. Again, same bearish chart pattern, fall down, triangle pattern, and from there again we can get the downfall. Now at this point, how to enter at this point and what can be a target, how to trade in it basically. Once you spotted that I can see a chart pattern, that there is a pole, there is a triangle pattern, and this is a bearish pennant chart pattern. I will write it down here as well. Bearish. Okay. Now, at this point, we spotted our bearish pennant chart pattern. Now, what we do wait for? We wait for the breakout. What do you mean a breakout? Breakout is basically this is the support line. One candle will break like this, like complete. It will cross that line and it will give us an entry for sell side. We enter at this point. This is our entry for sell side. Whenever this line is crossed downwards, this is the line. Okay. So this is that line which got broke, and that's our entry point. We enter at that specific moment. We enter at that moment. Got it? Now, after entering into this moment, we want to decide our target. What can be my target? Till where I can hold my position, right? Now, for doing that, you just need to calculate one thing. Can you see this tool? It is called as measurement tool. This measurement tool, when you click on this, tap on the first candle which dropped and took a support. The triangle start basically. This is a triangle. This is a triangle start, right?
and this is a triangle end point, this is a triangle start point. So we have to focus on this triangle start point. Now we will calculate the distance. What was the distance of the triangle start point? From here to here, if we calculate, it was 2.62%. 2.62% of market can fall down. So that can be my safe target. There is no guarantee, like there is, I'm not saying that it will only fall 2.6%. It can fall more than 2.6%. But safe, if you want to go safe, I don't want to have loss. I don't want to be stuck with the market manipulation. So what we can do is a safe target we can keep is 2.6% according to the chart pattern. Chart pattern is at 2.6%. From here, if I calculate, go down, this is somewhere here, 2.6%. Can you see? 2.6% was completed over here. This is 2.6%. If I calculate from here to here, this is 2.6%. I took my profit. I got a safe trade and I exited. Simple. That's how you can start doing trading, even if you don't understand trading. Even if you feel very hard to understand, like what is going on, I don't even know. Market is falling down, market is going up, market is going sideways, like this. I don't understand what is it. Find chart patterns. Now, if you don't know chart patterns, if you don't know how to find it, how to spot it, I can tell you one thing. Come on the YouTube section, either search the types of chart patterns in the market, or I can tell you one thing. Come on the YouTube, go on CHEE CHEEZEEBIT, cheesy bit. Come on this platform, cheesy bit. Go on the live section. You can see this is us. This is our platform itself. Okay, this is not a different platform. This is our platform where we used to make educational videos regarding how to do trading, how to learn trading exactly from zero scratch. If you don't even know anything about trading, anything, still you can learn trading from this. You can just go scroll. Yeah, see, from this video, I have explained from the most basic, like what is candle, what types of chart pattern can you see. There is one chart pattern videos. I will show you that one chart pattern. Sorry. Triple candlestick. It's done. Yeah. Can you see? See, I have explained every of those chart patterns over here. Can you see? This is the chart pattern which I'm explaining right now. Hello. I will show you completely how to trade in it. There is the game I used to play. The previous support will be below wedge, and the support 2, which is the new support. Whenever there is new support will be becoming, it will be above the previous one. That is a go and search from the bottom, like from here you can start. If you want to learn legit trading and you have not learned the trading at all, then you can start from here. Learn candlestick pattern, this is the first video, and from here you can start all the crypto. You can watch all the videos and you can learn everything about how many types of chart patterns are there, different chart patterns, how to trade in it, and every of those things. And again, I'll like soon we are also starting to make small videos, like 1 to 2 to 3 minute videos regarding this chart patterns as well, like how to spot in it in the market, and those will come out maybe a like in the YouTube maybe, or it can come as a loop videos as well. Okay, so those we can also make. Got it? Okay. Now, this was regarding a chart pattern, how you can find it and how you can take a good amount of profit from that chart pattern. Okay.
Welcome again, Alfred 6183. Alfred, welcome, Alfred. Welcome. Like Rahul is there. And Lulu 666. Welcome. Welcome on the live stream. Okay. Now let's find our right now entry. Let's find some entries which we can take right now. Okay. Live trade, basically. Let's start from say on a huge fair value gap, but that fair value gap doesn't have to do anything like this. Okay, let's go on 4 hours. What else we can see? Can we see a support line thing? We can again, can we see, can you see a small same movement, like market fall down and is trying to make again a little very small triangle again, like it is going like this, and it may go like this and this again. Doesn't have to be like confirmed thing, but yeah, similarly, if you can start saying it, that's a good sign that you are learning the crypto, you are learning how to find chart patterns in the market. This is what I can see right now. Over here we have fair value gaps. We have one like this fair value gap, one huge fair value gap from where the market started to fall. Let's respect that fair value gap, and this is fair value gap. If you don't understand, how many years are you in the crypto? Almost. I started learning. See, there is a phases. I was learning and I was doing trading. I learned for almost half a year, 6 months. I started in back like 2022. I started learning regarding crypto, like what is crypto, how to trade in crypto, and all those kind of stuff. After like in mid of 2022, I started trading into it, but with a very less amount because I wanted to see what happens in the market, what kind of rejection I can face in the market, what kind of loss. Because everybody want one thing about the crypto market, that crypto market is very volatile market. What do you mean by volatility? That the price movement, the quick drop and the quick up, that is called as volatility in the market. Okay, so in crypto it was a lot, so I wanted to check myself, like if I take a trade, how good it will be. Can I catch those momentum? Can I change that volatility disadvantage into my advantage in taking those trades? I wasted like 6 to 7, like more than a year was my learning phase. Like what happens, how market tricks you, liquidity trap in the market. Liquidity trap is very important in the market because at the very end, market is actually a very greedy person. He wants your money because it's a vice versa thing. If I gain profit, that is market's loss. And if market gains profit, that is my loss. So market wants to be in a profitable position, which makes you in a lose scenario. So it takes at least, see, at that moment I was very like small, childish. So in that, I took a little time to learn, understand by doing a lot of trade, by taking a lot of trade, by doing paper trading. Paper trading helps you a lot. If you are in a very early stage and you are not that confident to enter in the crypto market, totally fine, do paper trading, do demo trading. It will help you to understand what kind of market is there. Rather than losing your real money, you can gain experience by losing a fake money, basically. Okay, and in that scenario, by 2000, like that 6 month was gone, I was just like doing a random trades. I didn't knew how to trade properly. I was taking this random trade, never found the demand supplies on every of those things, never tried, because I was just experiencing. I was giving my all self, like I was into this situation, like I have to face loss, because I have this mentality, like the more I face loss, the more I get experience in what I don't have to do or what I have to be safe of. So I did paper trading at that moment. And from 2023, even the half of the 2023, it was like I used to gain big amount of profit. And then in a small moment, those profit used to go as well in the losses. So the main earning of me started from 2024. That 1 year to 2023, it was just like I gained good amount profit, and then I have 10 losses in a small amount, which equivalents to that one big profit. So the main
you can say like perfect trading 2 years, imbalance and immature trading since 2021, 22. Sorry, 22. I started learning in 2022. Did the perfect trading since 2024, like the perfect one. Like now I know everything kind of stuff. Before that, it was we have to give some time to the market. It won't be like you can come to the market and you can take the profit out of things and you can go home, relax. Now it won't be like that because market is very manipulative. Market will tempt you a lot. I'm talking about the chart pattern side. There will be more situations that you might face, like a chart pattern has formed over there, but it will not give you the breakout. It will give you fake breakout, that it will show you that I'm falling down, but next moment it will go up. Those situation also happens in the market, and we have to be a lot aware of those all those situations of what's happening in the market. So to answer your question, 6-1, Alfred, yeah, it has been like, I'll consider just 1 year. I consider myself 1 year because that's the thing where moment where I was doing actual trading. Before that, it was my learning phase. That's all. Learning phase I was in, but the actual trading started from 2024. 1 year. You can consider 1 year. It's almost almost 2 years you can consider because 2025 is almost done. We are in the November right now. Just one more month and that's it. We are done. So yes, the actual trading 2 years, almost 2 years, and learning phase with learning phase 4 years. Problem is graph. Yes, it's not the problem. It's actually, see, graph is a representation of what? Money coming in, money going out. If I see candle, there is a red candle forming right now. That means graph is like a you can say calculator. It will calculate exactly those things which is given to him. It won't calculate randomly anything. For example, right now I can see red candle falling down, falling down, falling down, falling down, falling down. That means people over there are doing sell, 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 sell. Okay. So graph is not the problem. We read it in a very wrong way. We think like, okay, overall I can see market is going like that down, so it is sell side going on. No, you never know when it will get reversed, and that's the point we have to find in the market. It's not about watching market what is happening right now. It is about what happened previously and what are those points where the market reversal are pending. Reversal market can be the fair value gaps, it can be the demand zones, it can be the supply zones, it can be the chart patterns. Those are the reversal movements of the market which we have to find out. We don't have to find out what's happening in the market right now. We have to find out the reversal points where it can land and change the trend or continue the trend, depends on that. Okay, so now for our let's go into our I want to see something. Yes. Right now we are at the fair value gap. Okay, this is that one fair value gap. If you don't understand fair value gap, hi user 661291, hello, welcome to the live stream. Thank you so much for being a part of this live stream. Thank you so much for being. Right now I'm doing a market analysis. I'm trying to find a nice entry point for us. Okay, so hi user 661291, hello. And if like, see, I will speak a lot of stuffs, like a lot of technical words, fair value gaps, xyz, xyz, xyz. Rather than just listening to it, if you feel any doubt in it, like you don't know what is fair value gap, ask in the comment section. Clear your doubts rather than just watching what I'm doing. You get your explanation. I can explain you as well, like what I am doing over here. Okay, so if you don't know regarding anything, please feel free to ask me on the comment section, like what are you talking about.
If you have any doubt, anything, please do ask. Okay. Now, so this is the fair value gap, which is for sell side. So always everything related to sell should be in red color. Everything related to buy should be in green color, so that we can have that mentality. Okay, this is the red thing, means a sell can come. Okay, got it? So this is that one fair value gap in the 2 hours, and that same fair value gap saw in the 4 hour as well, which is right now making the market fall down. This one fair value gap. Fair value gaps are basically the limit orders, limit like sell side limit orders, which might get executed little later. This is that point from where we are saying the market is falling down. Okay. One thing spotting is not an important. Two things we need. We need a start and we need an end point. We need both start and end point. Okay. This is just a fair value gap. We need to see. We can see the market is falling down, but we need to see till where it can fall down. Till where? Right now, if you look at one situation, there is one liquidity trap over here which you are missing out. Liquidity trap is this. If right now, Alfred, if you don't believe me, if you don't trust me, I can show you one confirmation of how good I have started to understand the chart, how good I've started to understand the market. Okay, now this is a point. Long lower week. Can you see, compared to a lot of different candle over here, this lower week and this lower week is too long. What do you mean by that? That lower week is too long. Market faced rejection from here. Rejection means what? That people did buying. Market, the seller wanted to make the market go down, more down. This was the last point it came to. And from there, buyer entered. Buyer made the market go up. And they closed somewhere over here. This is the close of that candle. Now, a lot of people did buying. Yes, obviously people will go for buy situation with what? They will have take profit, and they will have the main important thing which market knows, that is your stop loss. When the market hit your stop loss, then only the market is getting profit, because that is something minus. Like I am going for minus this is my stop loss. Like till I can face this much loss I can bear, and this much profit I need. That is take profit is your profit, and SL is your basically loss. If a market taps to your SL, you are exit from the market and done. Now, whenever you see such kind of big upper wicks or lower wicks, that means from that point there are lot of people who have entered for XYZ position. Right now we can see rejection from bottom. That means a lot of buyers have entered in the market. Okay, so buyer will do what? I am telling you what market thinks. What is market's mentality? Okay, in that, people know that this is the market, know that this is a place where rejection happened. So a lot of people went buy. Their SL stop loss will be somewhere over here only, maybe here. So this market right now, with an 200% guarantee, will tap into my trend line exactly. If I go for right now, if I just this is paper trading doing, I went for sell. I'll just show you. Okay, sell. Where is the entry? Why it is not showing you? Sell. Okay, sell entry is there. I'll put my take profit exactly at that line. That's all. I don't want anything exactly at that line. And trust me on this, this market will tap into here and get tap into my trend line. Why it will tap into my trend line? Why I am so sure that it will tap into my fair line? Because market is always in the need of SLs. Like I said to you, we have to be in profitable situation. It's basically market versus us. For us to be profit, we have to grab the money from the market to understand it. And for market to be in a profit, if you understand the situation from market side, for market to be in a profit, he needs to find your stop loss. And these are very obvious places where stop losses are.
obvious, like lower week, I can see such a huge rejection. I know rejection means what, a lot of people went for buy at that moment. Now there are a lot of people stop loss over here. Trust me, by maybe like a few minutes or something, this market will tap into this trend line, exactly that trend line. Okay, this is stop hunt. I can give you one indicator for it as well. You can see it like uh what was his name? Stop hunt TFO. Stop hunt. Yeah. I forgot the name. Stop hunt TFO. Stop hunt. Stop hunt was the name. Stop hunt was the name. Where is that indicator? TFO. Stop hunt TFO. Inducement stop and TFO. Can you see this? Inducement slash stop and TFO. Click on this thing. Okay. Now I will show you exactly. See, all those places. It will track all those places. Let me just make it in a visibility input dotted to solid. Okay. Now every of those lower wicks. Can you see? Lower wick. Again, lower wick got tapped over here. Now this lower wick from where the rejection happened tapped into here. Now again lower wick tapped, lower wick tapped. Wherever you see all these lines are those places where these bottom lower wicks are being tapped for what? For finding the stop losses. And that's what market does. And it can be for both sides. Green means for buy side. See, from exactly here. Can you see a big upper wick from the rejection for downside? We can obviously see that the sellers entered in the market. We saw rejection, rejection, rejection. Now seller enter at this point, high price. Seller stop loss is where? Obviously somewhere here, here is stop loss of the sellers. Market went down to trick them that yes, I am falling down. But the next moment, market again went up, tapped into all of the stop losses and gained the profit. Right? Same thing is happening right now. So I would suggest that right now, if you want to try my things, if you want to see how a good profit I can make you earn, right now go for a sell entry at the BTC BTC future trade, and make your like SL, make your take profit at the lower wick of this. Okay, that's all. That's all. And tell me how good amount of profit you might be. A short entry, a very short entry at this point. A very short entry. In the Ethereum, see, in the Zbit, I will tell you the prices as well. Okay, one second. I'm watching 16 minutes. Okay, this is that point, right? The price of that point is, one second, let me zoom it. This is that price, 98965. 98965. Put your take profit. See, from here, go for open short. Put your price at the current market price. Okay, see, put the current market price. Whatsoever investment you want to do, just for trial. See, you want to try me my first live trade, Alfred, because this is my first reaction with you. So if you want to try my first live trade, go for either, if you want to go for small, go for small. Either you want to go for big, go for big. If you want to go for all out, go for all out. It depends on you. Open short over here and see. Can you see your trigger TP and SL? Put your take profit as what was the price over here? One second. It was 98965. Take profit, put it at 98965. Put as a take profit, you will be earning a very good amount of profit right now.
and sure short profit you will be earning right away. The market will fall till this point for very, very sure. Market will clearly fall for that movement over there for very short. Trust me on this. So go for a sell entry at the BTC future trade. Go for a sell side. Put your take profit as 98965, because see, I am watching a Binance chart. Okay, so the price might differ. Every chart of every platform has a little different, slight different chart pattern, because of like we buy in some different price and they buy in some different price. That's why there is a difference between the prices in the different form. Okay, so in the Zbit platform right now, my take profit should be 98965 take profit. Enter at whatever. If you want to put 10%, 20%, 50%, or 100% of your investment, go for it. 98965 is your take profit thing. Okay, you don't have to put SL. Do not put SL. Don't put SL. If you don't, yeah, seriously, don't put SL. And also do not put this cross margin. Always use isolated margin. Isolated is the one which you want to use, because isolated will help you to save your money. It will help you to keep your money safe. It will not help if you put the cross margin over here, cross margin mode. It will eat up your account balance a little, because do you know what cross and isolated margin is, Alfred? Alfred, do you know what a cross margin is? And like margin mode, basically, do you know what the margin mode is? Alfred, do you know what margin mode is? Do you know what is cross margin? And do you know what is isolated margin? If you don't know, I will explain you what is your cross and what is your isolated margin. Okay. We can capture almost 1% of the market right now moment. If we enter at right now moment, we can capture 1% of the market. 1% is not a bad for a start. Okay, 1% is not at all bad. I was not in the live trading scenario before I was explaining a lot of stuffs. Otherwise, I would have entered from this point because of the fair value gap. I would have entered from that moment, and if I would have entered from this moment, my profit would have been almost 2.5% of the market. But I have entered late. It is totally fine. Totally fine if I have entered late. But still I can capture 1% of the market. Still there is an option for me to capture 1% of the market till now. And please do pick the isolated margin mode. And if you don't know about cross margin, isolated margin mode, then ask me. I will help you in understanding what do you mean by cross margin and what do you mean by isolated margin. Alfred, if you are watching it and if you don't know regarding margin modes, please ask. Okay. Okay. Alfred, do you know do you know regarding this cross margin and isolated margin, this margin modes? Are you familiar with the Zbits option over here? Alfred, are you familiar with Zbit options? Like, what are these options? What is this? 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 If you don't know, let me help you. I will help you in this scenario to make you understand what everything means. Alfred, are you still in the live stream, Alfred? I can see that you are in the live stream. Again, Alfred, if you are here, which you are, I can see that you are since 20 minutes, you are here only. No, you are not. अरे यार
I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Okay, 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 okay. My this net, yeah, 98965. Yes, yes, that's the take profit. I don't know. Okay, not it. Yes, IMC. Yeah, now I can see, like, sometimes, like, because of the network issue I cannot see the chats very easily. I just refresh it, now I can see your chat. Okay, so what do you mean by isolated version? And also I will explain you this panel over here, this future panel. Okay, let's start with the margin mode. There are two margin modes. One is cross margin, one is isolated margin. What do you mean by cross? What do you mean by isolated? Okay. For example, see, this trade is going on. Okay. You can clearly see till now $227 profit, good amount of profit we have already earned. Okay. It will for sure go to 98965 for sure. Okay. Now, what do you mean by cross margin? For example, let's say that example, you have 10 USD. Okay, this is your amount balance. I will write it BAL. This is your amount balance. Okay, from that 10 USDT, you invested, took a trade of worth 5 USDT. Okay, so 5 gone from here, 5 USDT. Got it? Okay, remaining 5. And we are learning about what? Cross margin over here. Cross margin. Okay, 10 USDT you had, 5 you used, 5 is remaining. Got it? Now, let's say, for example, let's say you went for buy situation. Example. Okay, you went for buy situation. So this is the point you entered. Whatever profit you will be earning, if that is, if the market goes above this situation, then only you will be having profit, profit, profit. But if the market goes down from this movement, from your entry point, this is basically your entry point. Okay, from the entry point, if you go down, it will be minus, 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 minus. Basics, right? Now, how much minus can you go? Your investment is what? 5. So our general idea says what? That I can go minus 5. After going minus 5, investment 0, trade should get closed. But no, that's not what gonna happen in the cross margin. Cross margin doesn't work like that. What is happening? For example, you invested 5. You had $1 loss. 5 will become 4. $2 loss you had. 4 will become 3. $3 loss you have. 3 will become 2. $4 loss you have. That 2 will become 1, and 5. Now this became 0. Your whole investment went. It gone from the market. Right? Now, in that situation, in this situation, 5 is already gone in the market. The trade should get closed. But the trade is closing? No, it will not get closed. Why? Because you are using a cross margin. It will again have minus 6, minus 7. Now you are wondering, I invested 5. My 5 is gone from the market. If you are facing loss, okay, my 5 is gone from the market, then why it is showing minus 6, minus 7? Where is that money coming from? That money is coming from here. Why? Because cross margin allows the market to use your remaining balance. Whatever is remaining over there, it will use that as well, unless it becomes 0. It will go till where? Minus 6, minus 8, minus 9, minus 10. You had 10, remaining was 5. Till here, your investment was there. And till there, your remaining balance is here. Cross margin uses your available balance. So if you know crypto market has a very good volatility, like it can fall 5%, 6%, 7%, like fall. In that, this cross margin can eat up your balance. Your investment gone, and you see a very huge candle came suddenly, whole balance 0. So to save your balance, always use isolated.
What isolated is going to do is exactly opposite thing of cross margin. You entered in the market, you had -5 here, investment gone, trade close. Isolated margin will not use your available balance, will not use. Cross will use, isolated will not use. Okay. So you understood what do you mean by cross margin? Cross margin, you are allowing a market that if my investment is gone, if I'm facing a loss, and whatever I invested, for example, like I said, 5 USDT, and I'm at the point of -5, my investment is gone. Still, to keep you active in the market, it will use your available balance. Okay. And once that available balance gets zero, the trade will close. You are not even having investment and you're not even having an account balance. Complete zero. So don't use cross. Always use isolated. Got it? Now, next option over here is leverage. You can pick your XYZ leverage, whatever leverage you want to pick. But at the same point, you might be noticing, can you see max holding size is about. The more you increase the leverage, the less you can buy. The less leverage you take, the more you can buy. It will give you a limit. Like if you take 18 leverage, maximum you can buy is 1000. You cannot buy more than 1000 if you are taking 18 leverage. If you are taking no leverage, then maximum you can buy right now is 18,000. If I make it 25, at 26, I can buy maximum 120, not more than 120. Understood? Good. So this is leverage now. Every coin has different leverage. Bitcoin is about 125x. It can go up to what? 125x. But there are some coins, like for example, XRP. Let's go for XRP. XRP's leverage will be just 75. Max 75. No 125. So leverage depends. Some has high leverage, some has low leverage. Some can go up to 75, some can go up to 125, or maybe some can go up to 100. So you always have to check what coin is having what leverage, and always make sure that what is your maximum holding at that moment, because you cannot buy more than that. Okay. The market will not execute your order. It will show error that you are buying, like you are not buying more than that, or exactly something like that. Okay. Now, after that, there comes two options: open, close. What do you mean by open? Open means I want to open a trade. Close means I want to close my trade. Very basic, very simple. Now, there are three types of order which you can see here: limit order, market order, trigger order. Three types of order: limit, market, trigger. Let me explain you all those market orders. What do you mean by limit? What do you mean by market? And what do you mean by trigger? Okay. So let's understand limit order first. What do you mean by limit order? Limit order means, see, for example, right now, this is my market. My market is started from 50, is right now at 120. Okay. Price, this is price, 120 USD. Example, just example. I know there is no such coin which is 50 USD or 120 USD. Okay. Just an example that I don't want to enter at 120. This is a market price. I don't want to enter at market price. I believe if I wait for, let's say, 1 hour, 2 hour, 3 hour, market can come down again, maybe at some, let's say 70, 80 or 90 price. And from that moment, I want to go for buy situation. I don't want to buy at 120. I want to buy when the market price comes down. Got it? So in that situation, what you can do is set a limit order that I don't want to enter at 120. I want to enter at 60.
until and unless the market comes to that 60, taps to your price, the market will not execute your order. It will wait for the market to fall down to that price which you have set. For example, live, I will show you some live thing. Okay. For example, live thing. I'm just closing this trade to show you something, or else I can open some other account. Okay. Let's open Ethereum. Let that be on. Let's open Ethereum. Okay. Now, can you see what is the market? Can you see? Can you see the market price over here? 3226. Okay. I don't want to enter at 3226. I want to enter at somewhere around here. Like, let's say, let's imagine I want to enter at somewhere around here. 3247. 3247. Then and then only I want to go for sell. I don't want to enter for sell over here. I want to enter sell over here. Is market there right now? No. So what market will do? It will wait. For example, this, my limit order. What is the price? 2.17 is the price. I don't want to enter at 2.17. I want to enter where? I want to enter at 2.5. Until and unless the market comes to 2.5, your order is not placed. Your order will get placed only after the market comes to 2.5. From there, order got executed, and whatever XYZ profit loss is starting point, it will show you at that moment. Okay. So limit order means what? That I will enter according to my in this I can show you one thing. Trade. See, limit. I want to put price. Right now price is what? 3231 current market price. I don't want to enter at 3221. I want to enter at 32400. That's the price I want to enter at. 32400. I went for sell. I want to enter for sell option. Sorry. Close. 32400. 32400. I want to enter for buy option. Sell. Come down, bro. Yeah, limit not for buy, for sell. Why can I do the sell thing? Okay. I want to go for sell. Now you can clearly see my order is there, not yet got executed. My order is just there, just sitting there. This is sell limit. That's all. Can you see any plus minus thing over here? Or even if I come down at this point, even if I come down at that point, I won't be able to see any open positions. Okay. Until the market comes to this point, there is no order yet to be executed. Simple. This is called as limit order. According to my preference, I will enter in the market. According to my preference only. Now, and next thing is this is limit order. You understood limit order? Limit according to my price. I don't want to enter market price. Current price, no. My price I will enter. Then only. Then comes market order. Market order is simple. Whatever price is going on right now, that's the point you will enter in the market. You cannot pick your own price. Market order means at market price. This is market. This is the price of the market, and you have to enter at that. Whatever, buy, sell, whatever you want to enter. Now, what do you mean by trigger order? Trigger order is very, very similar to limit order, but there is one catch. I will tell you that catch. I will explain you the catch over here only. Like, this is the best position for you to explain the catch. Okay, this is my limit order. Limit order set at what? 23240.60. That's my limit order placed over here.
For example, my market again came up, and came till what point? 3239. Just $1 has not yet touched my price, because my price is what? 3240. Market is at what? 3239. And from that moment, a very good sell came from the market, a very good drop. See, my market got executed. Can you see right now? Limit order plus 3 plus something is happening right now. So market was here, it came to 3 4 something, and then only my market got executed. And now I can see this plus minus thing. I put the limit order over there. That's why. So that live reaction for what the limit order means. Okay, now explain you trigger. It limit order placed at what? 3240. Market came to 3239. Example I'm giving. From that moment, a market fall down a lot. I lost my entry. Why? Because my entry was at 3240. Market fall down by 3239. $1. By just $1, I lost my entry. Just by $1. A very good entry I lost. So that's where trigger order comes in help with. Trigger order, for example, if I say I want my trigger, if I put over here, see trigger 3240. That's my trigger order for what? For Ethereum. Let's go Ethereum. Trigger is 3240. That was my trigger order over here. I will put my market order, market price over here. This is the market price. This is my trigger order. Okay. Now, after that, if 324 is going on, and by 3239, if there is some person who is giving me exact sell order, my quantity is 0.5. There is another person who is ready to buy 0.5 or ready to sell 0.5, and we are matching in the order. Trigger order will execute that order. Rather than waiting for it to come to 3240, it will execute my order at 3239, finding up the best position for you. In that scenario, trigger helps. Why? Because it won't do exactly the way I said, not the exact price, but something nearby. Something nearby that price. Whatever person is having that XYZ price, like I got, can you please create a Telegram group for your crypto signals? I'll see about it. I'll see about it. But I usually come live for 4 hours, so 4 hours is enough for us. I will see if I have to create or if I don't have to create. I will see for the Telegram group. I will see. Okay. So trigger means nearby position. If rather than my price, if nearby, if he can find a best position for me, he will execute my order without asking me. That is trigger. Okay. Market order I got explained, limit you got to know, market order you got to know, trigger order you got to know. After that, there is open long, open short. Before that, there is TPSL. TPSL is like basically my take profit and my SL. This is my stop loss, this is my take profit. You can just put it over here and it will mention it. If the market comes to SL, it will close your trade. If the market comes to your take profit, it will grab the profit and it will close the trade. Simple. Now, open long means you are going for buy situation. Buy. Long means buy, short means sell. The name is different. Rather than calling it buy sell, it says long short. Long means buy, short means sell. Simple. After this is the whole scenario. For example, let's say you want to close your trade now. How to close your trade? You did what? For example, let's say you did the market order and you said open long. Okay. You come to the close option and you will click on close long. If you open long over here, you will close long over here. If you open short over here, you will close short over here. Simple. Got it? Okay. Now, one of the most important, because this is, I really feel that
this one calculator option is very important for you to understand a lot of stuff, because we get confused like what is what is what is what is what. Calculator can help you understand this thing. Like even before you went to buy, it will tell you what kind of margin you require. Margin basically what amount of money. Yes, yes, yeah. So calculator will help you to know a lot of places, lot of things. Like first, it will tell you what amount you should have to take XYZ trade. For example, I will give you example. I will talk with example. Let me first note all the things, then I will give you example as well. First, what amount you require to enter in the market. Second, what can you take profit? What kind of return on investment you need? Everything it will give you exactly. I will show you how. First, we go on the target price. Profit and loss we'll decide later. First, target we need to find. Okay. Entry price, whatever you want, price you want to enter. If it's a market price, just type the market price. Market price is what? 3237. 3237. That's the market price. I want, and you have to pick first. Huh? You want to open long or you want to open short. That you have to pick first. I'll give you example of open long or open the same only, like won't matter. Open long, open short. You can decide whatever XYZ leverage you can pick, and according to that, it will give you the target like target price. Let's take 10x leverage. Not more, not less. 10 is a good amount to take a leverage. Okay. Now, my entry price was what? 3237. What was that? Is right now 3243. Fine. 3243. That's my entry price right now. Now, what amount of return on investment you need? For example, if I am putting 5 USDT or 10 USDT, 20, 30, 40, whatever, that is my investment, right? Now, on my investment, at least 5% I need back, 20% I need back, 30% of profit I need, 40% of profit I need, 60% of profit I need. That is called as ROI, return on investment. Okay. So let's go by 50%. Like at least half the price. I need 50% of return on investment, or let's go by 70. 70 is good. 70% of investment I want to recover. Whatever I invested, 70% profit I need on that. This is investment. On that, 70% of profit I need. Okay. I will calculate, and he will give me my this target price, XYZ target price, 3015.99. It gave you target price. Now we will take this target price and we'll put it in the stop loss. What was the entry point? 3243. Target price it gave. If I want 70% of returns, I need to have a target price of what? 3015.99. I will go over here. Entry point was 3243. Target price was 3015.99. Now size of Ethereum. What amount of size you want to buy? You don't know, obviously. You take 10x of leverage. We can buy 0.5. Let's say 0.5. If I calculate this thing, how much USDT I require? 162 USDT I require to buy 0.5 Ethereum. I will do what? I will go delete. I don't want to invest 162. I want to go for 0.09. Now, how much USDT? 29 USDT. Margin balance means what? That I require this balance to enter for 0.09 Ethereum. If I want to sell 0.09 Ethereum and I want to have a profit of ROI of 70%, then I require what? I require this 29 USDT. On that, PNL. What do you mean by PNL? PNL means profit and loss. My profit and loss is what? 20%. 20 USDT will be my profit. If I enter at 3243, market comes to 3015.99, and I enter with a size of 0.09 Ethereum, then I require almost 30 USDT. On the 30 USDT, I will be having a profit. Once my target price is hit, I will be having a profit of what?
20 USDT. Got it? Is that simple. Calculator will help you understand how much balance you need to have for taking a trade, what can be your target price, what amount of profit you can have, and you can select according to your ROI, rate of interest. You can select according to. If you want, I need 20%, it will be different. You want 30%, it will be different. You can pick from this thing. Everything it can give. Calculator, the ZBits calculator is the best. It shows your target, it shows your profit, it shows your ROI investment, it shows everything. Everything. Because sometimes I get it, like people get confused. Like, I don't know how much 0.09 USDT is. I don't know, sorry, Ethereum is. How much investment should I make and blah blah blah. Calculator can help you with this. Okay? Cool. Now, this is my time to go, people. Thank you so much for being a part of this live stream. Thank you so much for being a part of Zbit. Do not forget that on the live stream app, there are two options: deposit, recharge, and take a trade. Click on that deposit and deposit your first deposit. Trust me, like a lucky person might get a free giveaway. May receive a free giveaway, not commitment. May. Okay, so I'll see you tomorrow, same timing, 12 to 4 Dubai timing. Indian timing might be 1:30 to 5:30, and you can calculate the rest of the time accordingly. Okay, so bye bye. Thank you so much for joining the live stream. Thank you so much for being a part. This